सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है सबके? वी हैव द सीरिया पैनल बैक. अनफॉर्चुनेटली भल्लाल देव बाहुबली की ठोक रहे हैं तो वो नहीं आ पाया आज. राइट, बट वी हैव अजय फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग एएस रोमा. परम है अपने साथ रिप्रेजेंटिंग एसी मिलान, मतलब कार्डिनल सिन करने वाला था मैं. इंटर मिलान. Right, we have Param representing Inter Milan, we have Yogesh representing Napoli, and we have Dominic Calvert-Lewin representing AC Milan. अगर Calvert-Lewin को सच में ये मूव मिल जाता तो बहुत खुश हो जाता, लेकिन भाई लोग कैसे हो यार? आज शुरू हो रहा है सीरिया. How is everyone feeling? Good man, good. इंसान म्यूट पे है तू. Top of the world, man. This is like been waiting, watching other leagues start and waiting for your team to play. I think that's like that the anxiety level just shoots up. But बहुत excited है. And हर साल I think सब लोग को पता है, हर साल I think सबसे ज़्यादा entertaining, dramatic Serie ही रहता है. कौन title जीतेगा, कौन, मतलब it's unbelievable. Last year having Serie teams in the semi-finals and finals, मतलब अलग ही होने वाला है यार. Europe was dominated by Serie, बट जीते नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन मैन अनबिलीवेबल. Shit, here we go again. Shit, here we go again. That's the feeling. चिंतन से फुली अग्री करता हूँ यार, क्योंकि हर सीजन अभी लास्ट 3 इयर्स के लिए देयर हैज बीन अ डिफरेंट विनर, और हर एक सीजन व्हेन यू स्टार्ट यू ऑलवेज हैव दिस यू वेंट ऑफ कोर्स, एंड और हर एक फिर ये भी सीजन ऐसा लग रहा है कौन फिर से जीतेगा नया क्लब. सम पीपल वांट रोमा, सम पीपल look at Lazio as the dark horses because of their window. तो वो एक्साइटमेंट तो है. आई मीन देयर इज नो क्लियर कट फेवरेट, तो फिर से वो एक एक्साइटमेंट है. और ऑब्वियसली आज डिफेंडिंग चैंपियंस किक ऑफ करेंगे सीजन, तो देखते हैं कैसा जाता है. डिफेंडिंग चैंपियंस का रिप्रेजेंटेटिव पूरा नेता जैसा बैठा है. ऐसे से हिला रहा है, बटन शर्ट का बटन बंद और एकदम बाल योगेश गार्सिया full ready. So we are the defending champions, so we have to maintain standards. Serie का सारी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पे है. तो कितना कॉन्फिडेंट है योगेश टू डिफेंड द टाइटल भाई? यार लास्ट सीजन 16 पॉइंट्स से जीते थे, इस सीजन 25 पॉइंट्स से जीतेंगे. मां कसम, एक बार जीत गए तो मतलब ऐसा आइटम मत लाओ. इतना कॉन्फिडेंट है तू भाई ऑफ दिस सीजन? यार स्क्वाड पूरी की पूरी उधर ही है. किम मिन जे को डेफिनेटली लूज आउट किया, बट न्यू साइनिंग्स आए हैं. एक एक्साइटिंग न्यू साइनिंग आने वाला है इन फॉर्म ऑफ गैब्री विएगा. तो आई एम प्रीटी टीम इज वेरी सॉलिड एंड टीम इज स्टिल हंग्री. दैट्स द मेन थिंग. But listen bro, like manager has gone now. Okay, Rudy Garcia आया है, I know, but Spalletti was बहुत important जो आपने अचीव किया लास्ट सीजन. तो किम मिन जे तो गया ही है, बट मेरे को लगता है सबसे बड़ा लॉस स्पेलेटी होगा. भाई रूडी गार्सिया थोड़ा अंडरवेलमिंग अपॉइंटमेंट नहीं है. मैं दूसरे लोग का भी ओपिनियन लूंगा इसके ऊपर. रूडी गार्सिया थोड़ा अंडरवेलमिंग अपॉइंटमेंट नहीं लगा? एक टाइम पे कॉन्टे लिंक था, एक टाइम पे दूसरे मैनेजर्स लिंक थे. रूडी गार्सिया मतलब नॉट टेरिबल, बट मतलब इट वाज कि मतलब आप I think Ajay can answer this question first. Yeah. Rudy Garcia is the one guy who came from Saudi to Europe. He went the other way. Yeah. So see, when he came to Roma were literally in the doldrums, and we can never ever forget what he did for us, winning the first 10 games in a row. So it was definitely crazy, but he didn't have enough. Even the next year when Roma actually got Iturbe ahead of UA, तो ऐसा लगा कि चल इस बार तो अपन लीग जीतेंगे. But again he really was underwhelming towards the end. He's got his weaknesses, but yeah, again Rudy Garcia would have been a good appointment probably in 2016. So Napoli up 7 years too late.
और एक और चीज है कि आई मीन द थिंग इज पीपल आई थिंक अंडर एस्टिमेट हिज अप्रोच गेम की. लाइक इट्स नॉट लाइक वो इट्स लाइक ही इज गोइंग टू गो लाइक सुपर डिफेंसिव एंड अगेंस्ट व्हाट नापोली प्ले. आई थिंक उसका जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है इट फिट्स द बिल, बट एज अजय सेड इट्स लाइक maybe we are way past Rudy Garcia. I think Napoli deserves better. वो 7-1 होम लॉस टू बायर्न, मतलब बायर्न ने चड्डी चड्डी खोल के फाड़ दी. एशली कोल तो मतलब समझ गया कि भाई एशली कोल का टाइम आ गया है. You know, and so that's the approach he's going to bring. He's going to be, you know, all out attack. He'll suit Napoli style, but मेरे को ऐसे न्यूट्रल वाले में क्या लग रहा है कि मतलब रूडी गार्सिया ने शेंगेन वीजा लिया या वर्ल्ड का वीजा लिया और हर जगह घूमा है लास्ट 5-10 साल में. बिकॉज अगर मैं रूडी गार्सिया का विकिपीडिया पे देख रहा था भाई, ही इज गॉट मोर क्लब्स देन टाइगर वुड्स भाई. मतलब वो हर जगह है, किधर किधर नहीं रहा है वो. मेरे को पता नहीं कि सी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये अपॉइंटमेंट में ये था कि लिसन नापोली नाउ हैव रीच्ड द समिट, ओके, एंड नाउ यू नीड समवन. स्पेलेटी would have been ideal to stay, but you need someone who will be like, हाँ ठीक है मैं सबको रखूंगा. And to his credit, Quaradona and Osimhen have stayed, and we see Lobotka all have stayed, you know, like all these players जो डर था हमें. If you remember, योगेश, हम लोग end of the season बात करते कि let's hope they don't leave because Serie needs those players. अच्छा हुआ लुकाकू चले गया, but my point is कि I don't know the manager too well to have a lot of faith कि ये sustain कर पाएगा ये नापोली टीम को. तेरे को वो fear है? So actually, like one thing that we learned last season was that Aurelio De Laurentiis is not as eccentric as people call him. So unke player signings and coaches, they have been on point. So like I just trusted that the owner is doing the right thing. And definitely Rudy Garcia's name was not one of the favorites. Like Luis Enrique ka naam tha. There were like different managers who were running initially, and then like I don't know, like I guess it was more important that the existing teams ke mechanisms, the approach to play, that remains same. And if that is in place, we sort of need only a man manager, not a sort of a technical game. That is definitely required, but man manager is more important right now because the team is there, talent is there. So I think I'm like fingers crossed. Let's see. मानस में एक चीज बोलना चाहता हूँ, सॉरी निधि, कि क्या है ना, अगर आप देखोगे स्पेलेटी जैसे छोड़ा, डे लॉरेंटिस ने उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया बिना उसके परमिशन के, एंड ही ऑब्वियसली डिडंट लाइक दैट. और ऊपर से अगर आप स्पेलेटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, उसने क्लियरली बोला था कि ही डजंट हैव द मेंटल एनर्जी टू डू इट एनी मोर, बिकॉज 2 साल नापोली में रह के आई थिंक आई डिसएग्री विद योगेश कि ईडीएल एक्सेंट्रिक नहीं है, बिकॉज आई थिंक 2 साल रह के स्पेलेटी को वो एक्सपीरियंस मिल गया. I mean, you just don't extend somebody's contract by sending them an email and without having a meeting, you know. So I think उसका हो गया था, he was done. और स्पेलेटी ऐसा कोच नहीं है कि वो, you know, he'll want to win the Champions League. He's fine. उसको उसका स्कूडेटो मिल गया. उसकी मेन क्रिटिसिज्म वही थी कि उसने कभी जीता नहीं था. And I think Italy job अभी उसने ले लिया. I think that's the icing on the cake, and that's it. That's his career then, I think. It was a career-defining move, and I like same thing. Like European ambitions, I think Spalletti didn't have that much. AC Milan के matches के against में ही हमने देखा था कि the approach could have been better. And towards the season end, अब like fatigue बोल दो उसको या फिर इतने points का lead हो गया था उसको बोल दो, थोड़ा सा taper down तो हो गए थे towards the end of the season, and that has been one of the consistent criticism of Spalletti. That start is very good, but the end is underwhelming. यार थोड़ा रोमा के भी बारे में बात करते हैं अजय. लास्ट फाइनल हार गए लास्ट सीजन तुम लोग. You guys lost the Europa League final, right? If I'm not wrong, it seems like so far away, dude. पता नहीं, एक एंथनी टेलर करके एक बंदा का नाम. हाँ, ओ हाँ भाई साहब, ऑफ कोर्स हमें पूछो, हम तो हर हफ्ते डील करते हैं ये सब चीजों से. यार बट बॉर्डरलाइन सरप्राइज्ड कि मोरिनियो अभी भी है उधर. He declined a job in apparently Saudi का club and he said कि भाई मेरे को रोमा ही रहना, ये मेरा प्रोजेक्ट है. How advanced is the project now? Because हमने बात की थी कि लास्ट 4 साल में 4 different teams जीती हैं Serie. क्या रोमा कुछ कर सकता है ये सीजन when it comes to the title? Because I know you have not been in that pecking order. सबको पता है, like वो you've not been knocking on the door. क्या something out of the blue हो सकता है? Well, दिल बोलते हैं हाँ, दिमाग बोलते नहीं, because squad है नहीं.
फिलहाल स्कूडेटो को चैलेंज करने के लिए टॉप 4 would be the place to be and बट इस in साल तो short टॉप 5 है ना, बट इस साल तो टॉप नहीं 5 है ना, नहीं टॉप 4 ही है. सीरिया एंड प्रीमियर लीग हैव टॉप 5. अगर 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 इटली सेकंड रही कोएफिशिएंट में ये साल तो ही. So in any case, basically getting back to the Champions League is the goal. Or squad के बाद this transfer window has been actually adding a bit of depth. That was the goal because last year we didn't have the depth. So दो competition खेलना was ये squad के औकात की बाहर थी. You could see कि यूरोप में after a midweek game, Saturday Sunday we would lose to random small teams like Salernitana, Lecce or Lazio. So it was a very I love how you call Lazio a random team. वो धीरे से उसने so basically Mourinho had put all the eggs on the Europa League final कि वो जीत के champions हैं, but we all know what happened the night in Budapest. So I think इस साल भी उसका goal वही रहेगा कि probably top 4 and maybe a Europa League trophy as a redemption or maybe a Coppa Italia as a trophy and move out. This is the last year of Mourinho for sure. Why do you say that last year? Like, ऐसा क्यों like? He won't say after this, इसके बाद I think with the kind of FFP implications that Roma has got, he's got no spending power with the team. The owners are trying, but if UEFA has screwed Italian clubs in a way where Italian teams just can't compete, I think Mourinho will take that offer to Saudi next year. Fair. No, I feel it's I think it's उसके लिए love affair है. I think Roma is a place where the pressure is less, of course. Okay, and he's Jose Mourinho. कौन बोला pressure तो है ही यार. Pressure है the worst place to go. You can't expect like अभी जो तू बोला, you're absolutely right. You can't expect current squad. Forget you, and I can't expect Milan. Yeah. I can't even say they are title contenders. They might win, of course, but the point is he's on an unbelievable run right now with Roma, and I think he's got decent players. He though lacks a striker. I feel he can. Anyways, he's already created history by having being in two finals back to back. I think वो एक दो साल और रह के he can achieve something unbelievable and like and write his name in the history books. Yeah. I hope, but realistically नहीं लगता है चिंतन. Because that offer will come. He will go eventually. I really hope this is here. This year is Roma's year, but. When was the last time Roma won the title, Ajay? 2001. Batistuta, Montella. Totti as well? Yeah, of course. He's the captain. Of course. Yeah. Sorry, I mean, I'm just confirming. I mean, Totti has won the league, right? Of course, he's won the World Cup, but he's won the league as well. He's won the league. Didi to कुछ बोल रहा था. Let's address the elephant in the room, or as Param would call snake, Lukaku. Right? What a topic. Lukaku. Yeah. मतलब यार Param, how disappointed are you as an Inter fan in Lukaku? क्योंकि चेल्सी फैंस से हम बहुत सुनते रहते हैं कि लुकाकू से घटिया इंसान नहीं है, और बट एज एन इंटर फैन हाउ डिसअपॉइंटेड आर यू? देखो निधि भाई, लास्ट टाइम जब हमने किया था ये सेरिया मिड सीजन रिव्यू, तभी यू हैड आस्क्ड मी अबाउट लुकाकू इटसेल्फ, और तभी मेरा मुझे याद है मैंने बोला था कि आई डोंट थिंक हिज लोन शुड हैव बीन दिस थिंग मेड परमानेंट. और हाँ, क्योंकि उसके लास्ट 2 महीने ही अच्छे थे, ओवरऑल 5 महीने के लिए तो वो इंजर्ड था, एंड वी वर अबाउट टू spend 40 million for a 31-year-old, and it just didn't sit right with me given the financial situation. तो जब उसकी कैरेक्टर की बात करें, if you go break down the news, this guy was apparently negotiating with Juventus behind our backs before the Champions League final, which is, I have no words to describe that. I mean, personally मुझे प्रॉब्लम नहीं अगर आप Juventus से negotiate भी करो, that's, I know we are obviously arch rivals, that's not even my issue, but given the fact that it's behind your backs, और आप week in week out जाके बोलते हो Inter is the club of my heart, this club did everything for me, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चे के लिए, इंटरव्यूज में लिटरली रो रहा था बंदा चैंपियंस लीग फाइनल के पहले, and all that drama he did, and then when the club was about to seal the deal, everybody was calling up this guy, the sporting director, the coach, the whole team. He went AWOL for 4-5 days, he didn't answer, and everybody got pissed off, and the final call he answered, apparently it was only a 30-second call where a sporting director Auxilio said that no, you're not coming back, goodbye.
and that was it. Or yeah, khatam saga. Or of course I'm disappointed because this is like the second time he's done. First time उसने जब चेल्सी जाते समय publicly यूरोस के पहले बोला था कि मैं इंटर में रहने वाला हूँ, और in last 1.5 week में he pushed for his move out. So as a the thing is, as a person I'm not that gutted because players आते जाते रहते ठीक है, but I'm gutted for the manager because वो tactically he was relying on Lukaku, because वो कैसा भी आदमी हो वो tactically काम आएगा लीग में. अगर Lukaku Juventus जाता है, personally I think he's a perfect fit for Allegri because of the way Allegri plays. उसको एक कंपटीशन है, दो कंपटीशन खेलने सिर्फ Allegri को, कोपा इटालिया, सेरी आ, उसके लिए I think Lukaku is perfect for him. So if he goes there, he's got his man. So I am disappointed more for Inzaghi because we ended up with Marco Arnautovic at the end of the day. So that's a huge downgrade if you look at it. मेरे को पता नहीं था वो अभी भी फुटबॉल खेल रहा है. नहीं अर्नाटोविच साइन किया ना इंटर के लिए. नहीं आई नो, बट व्हेन दैट हैपेंड मैंने बोला भाई साहब ये अभी भी फुटबॉल खेल रहा है. इट वाज लाइक इंटर, एंड इंटर वाज इन द चैंपियंस लीग फाइनल लास्ट ईयर. और चैंपियंस लीग फाइनल अर्नाटोविच को साइन निधि तू समझ रहा है, दैट इज सच अ बैड साइनिंग बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब दे फाइंड देमसेल्व्स. और कैसा सिचुएशन है अभी अगर आप इंटर का स्क्वाड देखोगे, मोर देन 10 players have left, more than 10 players have come in. It's a completely new squad, almost pretty much all the leaders have gone. Even if they were average players, the leadership in this squad is completely, the dynamics have changed. Lautaro Martinez is the captain, he has to take more responsibility. Barella is the vice captain. So बहुत changes है. और जब ये लुकाकू पे क्यों पिन करता हूं मैं, क्योंकि अगर वो आता तो एक रिलायबल स्ट्राइकर होता. लुकाकू से हम लोग गए मोराता पे, वो नहीं आया. वो अजय को पता होगा, ऑब्वियसली इंटर एंड रोमा वर बैटलिंग फॉर द सेम टारगेट्स. मोराता, स्कामाका वाज हाईजैक्ड बाय अटलांटा, वी लॉस्ट आउट ऑन हिम. सो वो सब से, तरेमी से, प्रूवन स्ट्राइकर से, वी एंडेड अप विद अर्नाटोविच. So it is disappointing. So of course that is why people now hate Lukaku over here. There is no sympathy for him, absolutely zero. I mean, if a person like Javier Zanetti comes out and says that Lukaku has betrayed the club, I think that says all, because I was just going to say that you cannot reject Zanetti's call, man. He's Inter Milan, and you don't pick up his call, man. You don't deserve to play there. लुकाकू ने तो जितने मैचेस किस किए तो मतलब क्या ही बताए. उसने वेस्ट ब्रॉम, एवर्टन, चेल्सी, इंटर और किधर खेला, बेल्जियम में, मैन यूनाइटेड भूल गया मैं, फिर बेल्जियम में. निधि और मानस एक चीज बोलना चाहता हूँ, he is in negotiations with a club whose fans, I'm sorry, thousands of fans, a section of fans, not everyone, racially abused him in a match. That's the club he's been negotiating with. Just think of it all in the grand scheme of things. Juventus fans going outside J Medical and protesting the signing of Lukaku. लोग बोले हम लोग को नहीं चाहिए भाई, वो लोग को भी नहीं चाहिए वो. Only Allegri wants him. So because of the tactical fit, that's the only person who wants Lukaku over there. So I mean, यार अभी डीजे नहीं है, नहीं तो मैं उसका पर्सपेक्टिव लेता. लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ. I'll come to चिंतन. अभी हम लोग ने जेनेटी का बात किया. What the fuck did you guys do with Maldini, man? Why did AC Milan do that? क्यों किया? Man. अटक गया हुआ, I think. चिंतन का इंटरनेट. माल्डीनी की बात है, मिलान ओनर्स ने हैक किया. अच्छा, AC Milan's heart को stop कर दिया लोग. That was. He'll be back. तो तब तक योगेश का ओपिनियन लेते हैं यार. योगेश, इस साल मतलब what is the expectation given कि रूडी गार्सिया अभी मैनेजर है, you've lost out on गांधी, but अभी आगे क्या करना है? I guess at least April तक we should be in the title contention. If we don't do that, then it's Rudy Garcia experiment does not works out. उसका ये meaning होगा. And Champions League is there. For the first time in our history, we went until quarterfinals last season. So matching that or exceeding that would definitely be a huge plus. What are the players भाई जो आए नापोली में ये सीजन, अगर जो सेरिया ज्यादा फॉलो नहीं करते, but with all due respect because we are trying to educate everyone, we want everyone to watch Serie as well, तो बता सकते हैं नापोली का बिजनेस क्या हुआ है? किम मिन जे गया पता है, आया कौन है? So Kim Min-jae का Napoli did not want to sell him, but a release clause था उसके इसमें, so Bayern just activated that and
He just went, like, we thank him, but and we got a decent uh, we got a decent amount for Kim Min Jae as well in just one season. So the main replacement for Kim Min Jae's position is Nathan. He's a Brazilian, came from Red Bull's club in Brazil. He's very tall, very What, physical. Nathan? Nathan, N-A-T-A-N. Nata? Nata, Nathan Bargentino. Acha, Sorry for okay, spelling okay. correctly. So he's a very physical Brazilian centre back. He will need some time to gel in with the new dynamics. Serie is quite different from what he's used to. I like that his head is in the place, like, and he's very excited to be with the team. Next, we signed if I don't know if I'm spelling it right, Jens Jens. Yeah, Ghost. yeah. Again, a French, very physical, number 6 type of midfielder, box to box midfielder. He is going to fight for starting position with Angisa. Okay. So Ndomble was there. Ndomble's loan was not converted into a full permanent signing. So his Jens is Ndomble's replacement essentially, and Gabri Viega is coming in. A lot of people know about Gabri Viega. He can play any role in midfield, in attack. Very tricky midfielder, likes to take man one on one, and he has a very unique shot technique that he is very famous for. So he's going to come in hopefully next week. So yeah, So भाई एक प्लेयर गया और 3 आए हैं, मतलब तो ऐसे बोल सकते, is that correct? yeah, that's correct. Ndomble भी गया, his loan was not activated. So yeah, एंडोम्बले तो ना के बराबर है, स्पर्स भी ना बोल रहे हैं अभी उसको वापस कर. हाँ, नो, वो कौन पोस्टेकोग्लू बोल रहे हैं, मेरे को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है. yeah, actually. So अरे लोजानो का क्या सिचुएशन है भाई योगेश? वो तो प्रोजेक्ट में लग है नहीं, पर अगले हर एक वीक नई स्टोरी रहती है. The club is open, like, if he accepts to continue with Napoli on a lower wage, then he can be there. But same for Lozano and same for Zielinski as well. Zielinski के काफी rumors आ रहे थे Saudi Arabia. Zelensky तो गया ना सऊदी. नहीं, he's not going. He has his heart in Naples, so he is not going. भाई कितने जल्दी रिलीज करने वाले हो? कितने जल्दी रिलीज? स्कूडेटो स्पेशल्स. Zelensky कड़क प्लेयर है. Zelensky to batch on his chest. He wanted. He's just said that he wants to play with that Napoli jersey. So yeah. Zelensky और Politano दोनों मस्त प्लेयर है. Politano, सॉरी, अरे दूसरा मिडफील्डर यार, लोबोटका. कौन? लोबोटका. सॉरी, लोबोटका. दोनों बहुत अच्छा है. हाँ नहीं, अच्छा है पोलिटानो, बट हाँ यार, चिंतन भाई क्या किया यार तुम लोग ने माल्डीनी के? I think my internet also didn't like doesn't want to talk about this. I see. नहीं, डीजे का नाम लिया ना, डीजे का नाम लिया, इंटरनेट लिया. Oh yeah, man. I think it's of course it's very upsetting, as you know, like, he was the face of the club, and he is, of course, he has the greatest, like, one of the greatest defenders, and you know, he's a symbol. And there are so many players which we bought in the past, जैसे Theo, Liao, Mike, all of them have openly said it कि यार हम लोग है इधर because of Maldini, you know, because he's that influential. But I guess somewhere the management, the coach, I don't think it aligned. Hamara, you know, the scouting head Moncada, I think he's been telling abhi openly thoda bahar aa rahi hai cheez, like he had suggested players which were shot down by the management. You know, one of them being Enzo Fernandez. Like, I think he was offered, we had a chance of getting him for 10 million. And there were players which were shot down, and there were rumors, you know, that he's not listening, as in the ideology was not aligned. And I guess management तभी decide कर लिया होगा कि टोनाली को निकालना है, because I think to fund new transfers we needed to sell someone big. लियाओ तो जाने नहीं वाला था because the project was based around him. I guess align नहीं हुआ. I think this management wants openly बोला है कि money ball system चलाना है, you know, get players which have high ceiling. If chance मिलेगा, sell them for double the price, build another squad. I don't think
Maldini was in line with that thought process. I guess that means what in short, it just happened overnight, and he just decided I'm not going to continue anymore. And the difficult part, which to understand, was the club didn't release any statement. मतलब बहुत ही upsetting था यार. Like someone as big as Paolo got no farewell, no post. It was just a rough dry post that okay हाँ उसका birthday post उसके बाद था. It was nothing. It was very upsetting to see how he was treated. I don't disagree कि चलो club आगे बढ़ाने के लिए शायद we had to sack him, but I don't like the way he was treated. You know, it was very, and immediately after that, Tonali just left, and he was a torchbearer for us. Yeah, you know, he was. I still agree with the fact that he was not the greatest skillful player, but जैसे परम भी बोला था, he was a leader. You know, sometimes club needs players like Tonali, you know, to carry your club forward. Plus Italian था यार. We thought he's going to be staying with us for a Milan fan as well. Yeah, Milan fan, childhood Milan fan. रोया हुआ था ना जब Zlatan जा रहा था. अरे हाँ, he cried when he signed for Milan also, you know, and it was unbelievable how things turned out. But उसके बाद the market has been Milan have been quite active. I think one of the most active clubs in the summer. मैं वही पूछने वाला था, like it looks like a decent window because मैं ट्विटर में पढ़ रहा हूँ, पब्लिक बोल रहा है कि sure they have lost Tonali and Maldini, but धंधा किया है काफी. Yes, I think we lost him. We got Loftus-Cheek. Of course, uska injuries aside, looks like a very promising player, and he was quite highly rated in England. And we got Tijani Renders. You know, he's also very skillful, and we already had Benacer, and we've got Musa. I not really know much about him, to be honest. कभी देखा नहीं है. मैं तो मैनेजर भी खेलता हूँ, मैनेजर पे भी सर्च किया. कुछ ज़्यादा I don't know how good he is, but we lost a lot of players. As जैसे परम बोला, even Milan, there are so many outgoings. कितने loans deals जो cancel हो गए थे. One being Bakayoko. My God, that was good riddance. Finally चला गया यार. And the surprising part is he still does not have a club. So we've lost a lot of players, and the market looks very promising, to be very honest. I'm still upset seeing Tonali play for Newcastle. Was very gut wrenching, you know, to seeing him in another jersey. Plus, it looks like a Juventus jersey, so it was all the more disturbing. But you know, I want to keep that aside, and I want to be very positive that market तो अच्छा अभी तक लग रहा है. But again, जैसे परम बोला, can they gel in together immediately? Yeah. But Pulisic Chintan, like Pulisic भी sign किया. Pulisic, yeah. Finally, after some 2000 years, we finally signed a right winger. I don't know what were we doing before that. I guess that was one of the biggest chinks in Maldini's armor. मेरा एक क्वेश्चन है. I'll start with अजय. अजय यार देख, अभी तो हम लोग ने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि ठीक है, पहले मतलब सीरिया के ऊपर जो पहले मतलब ये लगता था कि अरे वन हॉर्स लीग है, क्या है, यूवेंटस जीतेगा हर साल, अभी वो चेंज हो गया. ठीक है, यू हैव दैट इज वे मोर एक्साइटिंग. बट वुड यू से यूरोप वाज अ डिसअपॉइंटमेंट? और बिकॉज फाइनल्स में तो पहुंची सारी इटालियन टीम्स, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग एंड कॉन्फ्रेंस. ठीक है, हार गए वो अलग बात है, बट सीरिया के लिए एज अ होल, एंड ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछ रहा हूं, स्टार्टिंग विद यू, व्हाट डू यू थिंक विल डिफाइन सक्सेस फॉर सीरिया दिस ईयर? क्योंकि at some point money needs to flow back in वो बड़े स्टेज में. So that again, do you care about what is good for Serie, Ajay, or you just want to see Roma do well? Like the point is, it's a mix of both. Yeah, it's a mix of both because my point is like मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता एज अ लिवरपूल फैन कोई प्रीमियर लीग के बारे में क्या सोचे, as long as Liverpool, because 30 साल में हम एक लीग टाइटल जीते, you know. Yeah, so I just want us to win the league. Sorry, that's because Premier League does well. Ripple effect होता है. अगर पैसा नहीं आएगा. हाँ समझ गया मैं क्वेश्चन, बट मेरा पॉइंट है कि बट एज अ रोमा फैन तेरे को वो, do you care about it as well is my question, or you just want to see Roma play well? See, I think it really matters if the league does well. So the Premier League, because of its broadcasting revenue, because of modern stadiums and the way that it's marketed itself, it sends down, like, imagine Milan, Roma, Inter are competing with the likes of Bournemouth, West Ham, you know, for transfer targets. That is what it has come down to. With no offense to, you know, these clubs, they aren't in the same league as the top 5 in Italy. Matlab, bottom 5 of the Premier League can compete with the top half of Italy. That's where it's come down to. So, ek to wo hai, if the league does well, you know, it sends down, the ripple effect comes down
It helps all the clubs involved in the picture. But this is a mess created by multiple stakeholders in Italy. From the FIGC to the owners. I mean, उसके अंदर घुसने जाए तो we'll spend hours and hours. So point is obviously to answer Nidhi's question. I think it's very important that we have the league has a run like that. Like last year where you had the Italian clubs going really, really deep in all European competition, and hopefully this year one of the Italian clubs at least comes with some silverware. And you were not there this year in Europe, so for you, we may have a chance this year. Yeah, actually, I would want to say something here. In this, actually, very few countries where you will see this, where a lot of league fans support the national team too. Like all of us, I'm sure, all of us more or less root for Italy, and ऐसा कम होता है. Like I know a lot of EPL fans who don't give a shit about England, and as you said, Manas, coming to your point, थोड़ा different क्यों होता है? Ajay said perfectly. The league itself is doing well. So as of now, even if I would have been a Liverpool fan, I wouldn't care if City wins or loses, because you are at that stage where it wouldn't affect Liverpool, more or less. But हम लोग ऐसे stage पे हैं where it is a ripple effect. It is happening. What Ajay said perfectly fine is we are losing targets to Bournemouth, Leeds and all, so it is affecting us. And बहुत कम ऐसा होता है where all of us were more or less supporting the Italian teams to do well, because we want recognition. And yesterday I read somewhere on Twitter where I thought Nidhi also commented on one of the tweets, I guess, where people are comparing Milan and Brighton. I was like, I saw that. क्या है यार? I was like, क्या है? मतलब EPL, मतलब फुटबॉल यार 2000 में चालू नहीं हुआ था यार, so I guess वर्ल्ड वाइड व्यू के लिए भी, फॉर न्यूअर फैंस के लिए भी जो सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं अभी, उनको भी पता चलना चाहिए. तू 2000 बोल रहा है, यहाँ पे 2013 से शुरू हुआ है बहुत लोगों के हिसाब से. 2013 साल. And you know what the funny part is, when Inter Milan were playing City in the finals, I had a few discussions with some City fans and all, and उन लोग को ऐसा ही लगता था कि Inter Milan जो treble जीता was a one-off, and I was like, do you understand how historic the club is? Although it's our biggest rivals, and till City won, it was the only city which had 2 European champions. It's never happened before. It's the only city. Now, of course, there's Manchester. I don't think people understand. And जैसे हम लोग भी थे, of course, हम लोग जब फुटबॉल देखना चालू किया था, we also, but we were still aware of the past, what history was. We gave respect to it. जैसे मनस एंड तुम लोग को पता है, पब्लिक को ऐसा ही लग रहा है कि लिवरपूल अभी खेलना चालू किया है. मतलब क्लॉप के पहले लिवरपूल था ही नहीं, जैसे तुम लोग का डोमिनेंस था पहले. नो वन अंडरस्टूड क्या है लिवरपूल, एंड ग्लोरी हंटर्स हमें बोल दिया था. मैंने बोला इसकी माँ की आंख. मतलब रॉय हॉडसन 2020 में मेरे को कोई ग्लोरी हंटर बुला रहा, मैंने बोला माँ. Exactly. And it hurts, because what happens is, it was very difficult for me to support Inter Milan in a Champions League final, because Were you supporting Inter in the final is the question. No, I was very neutral. I want both the teams to lose. No, I was not. Understandable. It's understandable, dude. And plus, I would not. But when Lukaku missed that, I actually yelped. I was like, "Arey, kaise miss kiya ye?" And to be very honest, the 3 finals se na, usme se, I think Inter Milan did fairly better than City overall. I think they didn't deserve to lose. I think Fiorentina were all over West Ham in the finals. I think that guy should have tackled in the end. Goal chala gaya. I think it was unfair. Roma, I think, was just tired. I think Roma started off really well. It was they got screwed. I mean, but I think first half Roma were there. But I think it's just Sevilla. I think I think Sevilla. There was an English referee, bro. उधर तो कुछ ना कुछ होना ही था. एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ to what Ajay and Chintan said. कि the thing is, I think most of the fans you ask, they'll want a mix of both. You want your team to do well, but you want the others to do well so that the league is on the map. Because क्या है कि I think हम लोग ने एक पॉइंट पे सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो लीग रन करता है वो लोग बदलने नहीं वाले. ये सिंपल है. अभी आप देखो स्टेडियम वाइज से निधि और मानस, AC Milan and Inter will go their separate ways, which was pretty evident, but not because the two clubs have disagreements, but because there are certain deep politics involved which prevents the current San Siro from being demolished. बाहर से देखोगे जो सेरिया इतना फॉलो नहीं करता, उसे obviously for those people it will be good news कि सेरिया demolish नहीं हो रहा है. But to be honest, AC Milan and Inter need the Serie the San Siro to be demolished, not Serie, my bad. So that we need that clubs के पास है. So that पैसा clubs
and the clubs are planning to build a whole economic, commercial zone, not just a stadium. They want tourism to flow in, not just that. So it's been rejected. Both clubs are going their own way. और एक और चीज है, देखो, as Manas pointed out, we reached the Champions League final. We are signing Arnautovic. We have currently made a transfer of, a profit of 87 million on the market. We literally sold almost whole our team. Onana, best goalkeeper in the Champions League final. He didn't want to leave, but he was told about the situation. Sold. Brozovic, important player, tactically sold to Al Nassr. That too for peanuts, 18 million. And then you have leaders leaving left, right, center, and basically क्या हो रहा है ना? Even if you want to think that this new team is good, which I think is, a lot of players we've signed are good, like Carlos Augusto and all these guys, but they'll take time to gel. You should not be in a position where you have to refresh the team every window. Consistency nahi hai, there's no consistency, and then how do you expect the team to reach a Champions League final again? Now, अभी मैं जब बोल रहा हूँ इधर बैठ के कि I want Inter to reach the Champions League final again, it sounds very unrealistic, of course, but we reached the final last season, so of course I have desire to see my team in the final again. Why not? I want to see at least them reach the quarterfinals again, if not the final. But it's difficult because there are so many new players, even if they're good. So how does the coach gel them properly? So you need the league to be on the map. Paisa, the money is important, and they're just making the wrong decisions left, right, center. TV deals neglect हो रही है. Worst TV deal among the top 5 leagues, worse than Liga also, if I'm not wrong. So there's just no. It seems like there's no light at the end of the tunnel, as they say. कोई hope नहीं है. I mean, maybe someday कोई miracle हो जाएगा, but as of now, this doesn't look good. इतना डिजेक्ट मत होया परा, मतलब इतना डाउनर मत दे यार सबको भेंचो सुबह सुबह मैं वही बोलने वाला था कि मतलब यार सेरिया इज बैक टुडे यार, आज के दिन पे तो मत बोलिए. I think he's still reeling from the loss, I guess, but it is true. But you know what, the funny part वो जो बोल रहा है ना, सीजन चालू हो रहा है, वही सैन सीरो में जाओ, उधर ही जाओ, स्टेडियम में बाथरूम बराबर नहीं है, बास आ रही है, मतलब वही यार. Google toilets in Napoli. Oh my God. This shit splattered on the floor. I'm sorry, I have to say it. Like, I know so. एक बार आ जाओ निधि, तुम लोग सैन सीरो आ जाओ यार, एक बार देखते. बाहर से लगता है क्या हिस्टोरिक स्टेडियम है, अंदर टट्टी है यार, टट्टी. आ जाओ मतलब क्या, मतलब शेंगेन वीजा 8 साल लग रहा है मिलने के लिए अभी. Manas, the reason they have given to officially not demolish the San Siro is कि जो second tier है ना, वो historically important है, not the whole stadium, the second tier. That's the only thing. Yeah, that's the only thing that is important, इसलिए stadium demolish नहीं करना है. तो उसको कैसा बचाएंगे? How? Okay. नहीं तोड़ सकते. They're not going to demolish it, so that the stadium is going to stay. Cultural events होंगे उधर. No, cultural events कुछ करने वाले उधर. Concerts and all that. Yeah. So now imagine this main. So like the Colosseum. Yeah. Right. Guys, 450 people are watching. Like करिए स्ट्रीम को, अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब करिए टू मैनेज इन द मॉक. योगेश, ये गरीबी देखे तेरे को मजा आ रहा होगा ना दूसरे कि ये देखो, इधर हम एक प्लेयर बेचे, ओसी में हमें 200 मिलियन मिल सकता है, ये गरीब देखो अर्नाटोविच ला रहे हैं, स्टेडियम के लिए रो रहे हैं, एक बोल रहा है मेरा मैनेजर पक्का नेक्स्ट ईयर जाएगा. क्या बोलता है योगेश? नहीं यार. और and before you answer that question, what do you have to say about the toilets in Napoli? देखने जा रहे हो? जाओ मैच देखो, अच्छी चीजें देखो या गंदी चीजें घर पे करके आना. Sorry, अजय कुछ बोल रहा था. मैं बोल रहा था कि before you talk about signing, Roma are bottom in terms of money spent this year. So that is the state of रोमा के ऊपर एक क्वेश्चन भी आएंगे तेरे पास, बट योगेश क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ यार, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा सारी क्लब्स को. थोड़ा सा नापोली के बुक्स को, लाइक नापोली ने जो मेथोडोलॉजी किया वो अडॉप्ट करना पड़ेगा. पहले तो बैलेंस्ड बुक्स रहनी चाहिए आपकी. नापोली के बहुत ज्यादा फैंस एंड बहुत ज्यादा फैंसी डील्स एंड लाइक एडिडास, नाइकी के स्पॉन्सर्स और पैरामाउंट प्लस मिला है इंटर को, तो वैसे स्पॉन्सर्स भी नापोली को मिलते हैं नहीं. तो लाइक अरमानी भी कपड़े बना रहा है, मतलब
तो वो चीज है. अब आप यूवेंटस वाली चीज लाइक अपने कोर्ट वोट फिर जाना पड़ेगा आपको यूवेंटस के जैसा. धनंजय को बुलाओ भाई अभी. अच्छा, आज अभी यूवेंटस वाले धनंजय कोई है नहीं यार, मुझे वो फील नहीं आ रही यूवेंटस का. बट योगेश लाइक चैंपियंस लीग की बात करें तो जैसे यू गॉट द मिलान क्लब्स ओवर हियर. And which are the four teams? Napoli, the Milan clubs, and Lazio. Lazio we right? should, yeah. हाँ, so my point is clearly योगेश, मेरे को ऐसे लगता है कि आपकी टीम है जो डीप जा सकती है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिलान एंड इंटर, लास्ट सीजन वी वर बैकिंग लाइक एज न्यूट्रल्स. आई वाज होपिंग वन ऑफ देम विंस. मैं सच बोल रहा हूँ. बट इट फेल्ट लाइक अ फ्लैश इन द पैन. ऐसे लगा कि यह सीजन है जहां दे जीत सकते हैं, फिर बाद में पता नहीं कब होगा. बट मेरे को नापोली के लिए वो नहीं लग रहा. नापोली मेरे को लग रहा है कि भाई वापस दे कैन टॉप देयर ग्रुप. दे कैन गेट अ फेवरेबल ड्रॉ एंड बूम, आप फिर क्वार्टर फाइनल्स में हो. तो लास्ट ईयर तू चैंपियंस लीग को एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहा था बिकॉज आपने ऑलरेडी लीग जीत गए थे आप, मतलब लॉन्ग टाइम इन लाइक इनटू द सीजन, लॉन्ग बिफोर द सीजन एंडेड. सो इस बार क्या अप्रोच रहेगा चैंपियंस लीग का? आर यू थिंकिंग भाई जीतना है ये टूर्नामेंट? No, बिकॉज अगर नापोली फैन मेरे को ऐसा बोले, मैं हंसूंगा नहीं. मैं बोलता हाँ यार कर सकते, व्हाई नॉट. नहीं यार, मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक रहूंगा. चैंपियंस लीग जीतना लाइक पीएसजी नहीं कर पा रही है, मैन सिटी ने पता नहीं कितने करोड़ स्पेंड किए एक चैंपियंस लीग जीता इतने साल में. तो चैंपियंस लीग जीतना को लाइक मून शॉट बोल सकते हैं कि इट इज पॉसिबल. अगर आपको फेवरेबल ड्रॉज मिल गए लास्ट ईयर जैसे, देन एनीथिंग कैन हैपन. बट ऑन द वे अगर आपको रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख और मे बी सिटी जैसी लाइक मेन कंटेंडर्स अगर मिल गए, देन इट इज फाइन. यू वोंट काउंट दैट सीजन बैड सीजन. So Serie A is the focus, definitely. Champions League for all the goodies that it brings with it. So go as deep as possible. I think Napoli के लिए, for them, I feel it's other way around. I think Napoli should be aiming for the Champions League because ये कर लिया है उन्होंने, okay, and they have a pretty great team. To be honest, league shouldn't be that difficult for them to manage again. Now सब लोग बोलते हैं वो विनिंग मेंटालिटी नहीं है, वो अभी आ गई है. दे हैव डन इट, दे हैव फाइनली क्रॉस द लाइन. जो लास्ट 10 साल यूवेंटस डोमिनेट किए थे तभी दे वर देयर अबाउट्स, दे कुडंट विन. अभी वो कर लिए है. नाउ दे प्ले, जो सिटी के बारे में बोले, दे प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल, बट किधर है ट्रॉफी? सो आई गेस नापोली, जैसे मनस बोल रहा है, should be aiming for that because they do play attractive football. They can beat Real Madrid, a Bayern, or a City. I think on that day they can beat any team. So I think they should be aiming for it. And I feel what Manas said, I won't be surprised. At least the semi-final or a final Napoli पहुंच गए. I don't think people should be surprised unless जैसे निधि बोले 2014 देखना चालू किया होगा, वो लोग surprise रहेंगे. But they should not be still. I think क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच ही सकते हैं. मतलब I think depth wise the most like Napoli fit in होता है. अगर आप स्क्वाड देखोगे, पूरा continuity देखोगे, I think depth wise, player wise, Inter Milan, they both fit, but I think Napoli का वो जो continuity है, barring the coach, I think that can give them help them get a deeper run slightly more than the other Milan clubs. अभी और Lazio का क्या है? Lazio I think they are being slept on. अगर मेरे को कोई डार्क हॉर्सेस पिक करने स्कुडेटो के लिए और मर्कातो देखो तो लाजियो होगा, बिकॉज डिस्पाइट सारी और लोटीटो जो झगड़ा करते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे अबाउट साइनिंग्स, इसको ये प्लेयर चाहिए, उसको वो मिलता है. बट आई थिंक अगर इफ दे टेक द चैंपियंस लीग अ बिट सीरियसली, आई एम नॉट सेइंग दे आर विनिंग इट और एनीथिंग, बट एटलीस्ट राउंड ऑफ 16 और उतना कर लिया, आई थिंक यू कैन सी देम फॉर द स्कुडेटो देयर. आई थिंक थोड़ा पुश तो करेंगे वो लोग लाजियो, बिकॉज लास्ट सीजन बट they've sold SMS, but they finished second. They finished second. At the end of the day, people are forgetting that they finished above the Milan clubs and they finished second. ठीक है, Juventus का deduction हुआ, but Lazio still finished second. So इतनी तारीफ करके मेरे को अजय के पास ही आना पड़ेगा. हाँ वही मतलब वही मैं अजय, but honestly, sorry Ajay, to answer this question जो नीचे लिखा हुआ था about why is Juventus so much hated. So who do you hate more? Who do you dislike more, Lazio or Juventus? 100% Lazio. Obviously Lazio because of the rivalry that's there, the city rivals that's there. But I think it was very smart of them to sell Milinkovic-Savic not to one of the European clubs. And again, Sarri has got
his kind of players this time. Exactly. They've got Rovella, if I'm not mistaken. Yeah. Rovella आ गया ना? Rovella Best को sign defense किया in the उन्होंने. league. Best defense in the league last But they bought season. Rovella. So, yeah, they bought Yeah, Rovella. they got it. And उनका एकदम फंडा सिंपल है. Get out of Europe and try to finish as high as possible in the league. You never know. Even this year, if they get a tough draw, they might drop out of Europe. Yeah, वो लोग हमेशा यही करते हैं. वही. Ajay, you want to answer this? Yes, 100%. Yeah, Renato Sanchez is potentially a good signing if he remains fit. वो ही एक question mark है. And Paredes तो यार छोड़ के गया था. I'm a big fan of Paredes, and he came us when he was a kid. Came from Boca Juniors to Roma, and now he's come back as a man. With a lot of experience, winning the World Cup, and obviously the link up with Dybala, and he's been blessed by De Rossi to take over the number 16. So really happy to see him. And Matic left in circumstances that we would probably know maybe after some time. सारा अचानक से उठ के he left for Rennes, if I'm not mistaken. So good to have Paredes back. हाँ, मेरे को एक बात बता दो, ये जो रेनाटो सांचेज है, ये साला फुटबॉल का जैकी भगनानी नहीं है. ये हर साल लॉन्च होता है, कुछ होता तो है नहीं. इसका हर साल मतलब फ्रेश स्टार्ट, न्यू हाइप, कुछ मतलब ही. By the way, he rejected Milan last year and went to PSG. उधर बेंच में पूरा साल निकाल दिया. Injury prone. 15 मिलियन में गया. वो स्वानजी में भी जाके बेंच पे बैठ गया था. उसका जो ब्रेकआउट सीजन हुआ था यूरोज में, उसके बाद स्वानसी गया था. क्या बोलता है इसके बारे में अजय? यार, see, Sanchez को वही है, potential, lots of potential, but not realized it anywhere. And he's got a proven injury record, and he comes to a club that always has got a relationship with injuries. So let's see, man. Not a lot of hope. If he remains fit, nothing like it. But good player to add depth. The depth that wasn't there because वो Europa League final में दिख गया था. After maybe 70 minutes, the Roma players were gassed out because वो midweek. And people are forgetting Hasim Awar. People are forgetting Awar completely, man. What a player he is. He's a top signing, I feel. And he went under the radar, I think. Uska signing पूरा under the radar चला गया था. Great. What about Wijnaldum? Have you retained Wijnaldum on loan? No. Wijnaldum, he's gone back. Ajay, एक question पूछ. Yeah. खेला भी नहीं यार. वाइनाल्डम खेला भी कहाँ रोमा के लिए? उसका इंजरी हुआ था ना, बड़ी इंजरी हुई थी. Wijnaldum got injured in training by Felix Afena-Gyan, who was supposed to be sold 2 days later. So in his last training session, he goes and injures Wijnaldum. Wijnaldum, who was fit for when he played for Liverpool and PSG, he didn't have a very lengthy injury layoff. So the whole reason why the scouts got him is because he can last for at least 30 odd games a season. And look announcement क्या था उसका यार? Announcement क्या था? पानी से निकला था वो सब यार. क्या announcement किया था उसका? अरे अजय भाई, क्या ये स्ट्राइकर का सिचुएशन यार? तुम लोग मोराता नहीं ला पाए, स्कामाका यू विल हेट अस फॉर, बट मैं मार्कोस लियोनार्डो, तुम लोग क्या स्ट्राइकर नहीं है? और अभी क्या बेलोटी Lukaku ले लो. He'll kiss the badge, bro. He'll kiss the badge. I was a Romanista ever since I was a kid. उसके नाम में रोम है. हाँ, रोम है वो. यार, just imagine Atalanta's pull. Okay, Scamacca flirted with Roma to work for Inter, and Atalanta got him obviously because Atalanta sold Højlund to Man United. Exactly. The money, but that is what it is. Like Scamacca, he was from the Roma academy, and probably an Inter fan, and Atalanta had the pull to take him away from both these clubs. So just imagine, man. I mean, and Belotti का यार zero Serie A goals भाई Belotti. क्या I mean, see, the only bad year he had was with us. Unfortunately, Belotti had a lot of injuries as well. So he was still playing injured. Like he had a rib injury and a thigh injury at the same time, and he was still playing. So I believe in Belotti. I feel that this year he will come good. I mean, it's all the fuss around PL and La Liga. Here is the blog with Serie A, top content. Yeah, first of all, thank you, Yuvraj. Very, very much appreciated. But this is Serie A. This is a big ass league. This is one of the best leagues in the world. Just because and on paper, last 4 साल तो has been super duper exciting, bro. Matlab, you have everything. You have drugs. You have point reductions. You have different winners. You have scandals.
मतलब सब कुछ पूरा है। आप नेटफ्लिक्स Tantrums. को सेरिया कवर करना चाहिए भाई. Exactly. You have that And then stadium. Jose Mourinho there, and that's the best part. Jose Mourinho is also there. Man. Mourinho. He attracts. I think there's nothing better than Jose Mourinho on the touchline. I think it's the best. I think there should be one camera for him. Box देखो office. ड्रामा ऑलरेडी ऑन ही सस्पेंडेड ना पहले 2-3 गेम के लिए. So Bruno Conti is going. He and his assistant manager both are suspended. So Why? This is nothing. Best. Imagine the drama. We bought Musa from Valencia. He's suspended for the first 2 games because he got a red card in the last game. I still don't know how is it transferred over the leagues. The पहले गेम में ये हो गया already players are suspended without playing. मानस तेरे को वो मोरिनियो का याद है जो वो मतलब जा रहा था कुछ तो झगड़ा करने और उधर रेफरी देखा तो ऐसा चुप करके ऐसा भाग गया तो वाला देखा तूने? नहीं याद नहीं मेरे को. I think उसका funniest था he's clapping, he's having water and then he realized he has to complain about the referee and he just gets up and starts. That is epic, man. and the best was, you remember in Inter where he did the this will never go away. So last year he actually did a collab with a jewelry brand and or a watch brand. I think funniest is I don't think. नहीं sorry, go ahead Nidhi. अरे नहीं मैं बोल रहा हूँ मोरिनियो जब प्रेशर में नहीं रहता है ना, he is the best guy. मतलब वो जब उसको थोड़ा प्रेशर हो जाता है तो he becomes a little snatchy. I don't know the exact word to say it, like थोड़ा पाइकी, मतलब थोड़ा चुभता है. बट जब वो प्रेशर में नहीं रहता है, he is the best guy to be around. Nidhi bhai, you said it well. You said it well because उसने I think Ajay will know this. He gave this long interview to Corriere dello Sport before in pre-season where he said कि उसको रोमा में he knows how to enjoy things more क्योंकि he said वो बाकी previous clubs में उसमें वो pressure था जीतने का. और I think एक और funny moment था ये pre-season में जब रोमा के पास स्ट्राइकर नहीं था, वो पूरे टीम को लेके गैदर हुआ फोटो के लिए और बीच में गैप रखी क्लब को शॉट्स ही वाज टेकिंग की स्ट्राइकर नहीं है. He left a hole in like he left a gap in between the whole team photo और उसने बोला स्ट्राइकर नहीं है. Best Mourinho. Yeah, he's amazing, and I think Mourinho ka any matches against Juventus are worth watching. Definitely. He hates them. Like he can't. He's and proper, and plus uska record bhi aisa sahi hai na against big teams. It's unbelievable. I still don't understand last season how did Milan drop points against Roma? We were 2-0 up till 90th minute and 2 set pieces and 2 goals and bang. I was like, bhai nahi hota hai ye mere se yaar. Oh, ये moment definitely. Box office. Box office. I remember. But I think we are in this conversation. I think DJ nahi hai. We are forgetting this season. Juventus are not in Europe this season. Not in Europe. They are going to be difficult, and Allegri knows how to win. And Allegri ka best part hai, they have also. I always thought they have a decent squad. I always thought they have a good squad. It's just that last season Allegri ne kya kiya. But I think they're going to come back with a vengeance. And only club which I know who knows how to win with even a bad squad will be Juventus. Juventus never have a bad squad, no. That's the thing. मानस मैं इस पे थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट भी डालना चाहता हूँ. अलेग्री को बहुत क्रिटिसिज्म मिली थी लास्ट सीजन, बट टेक्निकली वो सेकंड फिनिश हुआ था वो स्क्वाड के साथ. विद द मेस दैट वाज यूवेंटस, दे डिडंट हैव अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर. उसके बावजूद उन्होंने जाके नापोली का स्पोर्टिंग डायरेक्टर उठा लिया, हु इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस. एंड आई एम सॉरी योगेश, बट आई हैड टू ब्रिंग दैट अप. बट and imagine this guy only has to play 2 competitions. He gets Lukaku, he has a decent squad, or he's apparently, if you believe the reports, Bonucci was the mole in the team who used to leak all the news in the media, fight with Allegri, उसको freeze out कर दिया टीम से. ये सब चीजें फिक्स करके अगर आप ऐसा यूवेंटस दे रहे हो जो सिर्फ एक बार खेलेगा एक हफ्ते में, आई थिंक पीपल आर स्लीपिंग ऑन देम थोड़ा, बिकॉज वो क्लब थोड़ा मेस में है, अभी लॉसेस है, लोग साइन नहीं कर सकते इतने प्लेयर्स पर. No, but I think it's going under the radar because they're not in Europe and इतना मार्केट में नहीं है. Plus they have a set of good young players. Their young players are really good. Exactly. और एक और चीज चिंतन, we are forgetting, जनवरी में एशियन कप है, AFCON है. You guys, Napoli will have players going. Juventus won't, and I mean they're not even playing Europe, and so fresh that's a big, fresh. So and I think Vlahovic fresh रहेंगे या फिर lazy हो जाएंगे, like they'll gain weight एक वीक में एक ही बार खेल रहे weight gain कर लेंगे. नहीं यार, अबे नाइजीरियन लीग थोड़ी चल रही इधर. Vlahovic, you said Vlahovic is also not going as of now. I don't think Vlahovic is leaving. Looks like Vlahovic is staying, Chiesa is staying. And people forget Chiesa injured था
and people forget the impact he has as a player. He is a player who can turn the game in a minute, and he'll turn the game. And I feel जो उनके दो young play, Fagioli, I think is pretty good. Miretti is pretty good, and that who's that English player they have young? I forgot his Ealing name. Junior, but they're Ealing looking to sell him. They're looking to sell him. But they're going to get decent money for him. I was surprised with Rovella going, because I thought Rovella was very again. Yeah, and I think they have money. एक shot मार देंगे end में to buy one big Lukaku. player. Yeah, and plus I think people are forgetting Pogba is very talented. Okay, and if he stays injury free, अरे but पर वो injured है भाई. I'm saying overall they have a decent squad. I feel that Juventus is a team which are going, and I think they'll be happy. No one is putting them as title contenders. No one is even building them against like top 4 kar lenge, will be good for them. I think it's going under the radar, like how last season Napoli chali gayi thi under the radar. I think Juventus are going the same way. Yogesh, will Napoli suffer the weight of expectation this season? तेरे को लगता है कि पिछले सीजन the element of सरप्राइज था नापोली के पास, वो ये सीजन नहीं है। नहीं यार, एक्सपेक्टेशंस तो खाली नापोली फैंस की है, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस तो कोई भी लाइक सब लोग मिलान क्लब्स पे ही बोल रहे हैं, यूवेंटस पे not this season. मैं मानस और निधि से पूछना चाहता हूं, they are asking us all the questions, but for you guys from each club, either in the panel and in Juventus, Lazio, whatever, one signing that stands out from each team, at least one, or one player you think that will do well in the league, anything, but some like at least one signing that stands out from each team. Honestly, I don't know every signing from every team. That is why we were doing this. Gabry Vega will be a great signing. Liverpool was linked. मतलब लिवरपूल कोशिश कर रहा था, बट हमारी लीग में टॉप टीम्स में हमारी औकात बहुत कम है पैसे खर्चा करने की। हमने कैसे काइसेडो के लिए 110 मिलियन मारा, मैं वो रिजेक्ट हो गया। द पॉइंट इज वी कुडंट बिलीव व्हाट द फक आर वी डूइंग, यू नो, लाइक ऐसा हो गया था। मिलान हैज मेड क्वाइट अ फ्यू signings. I think you guys have signed Yunus Musa from Valencia. Valencia. एंड आई थिंक वो वर्ल्ड कप में भी डिसेंट खेला था, वेरी हाईली रेटेड, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा प्लेयर है। पुलिसिच चल गया तो चल गया, बट यूनुस मूसा विल बी दैट गाय मेरे हिसाब से, जो आपको एक इंजन देगा टीम में। रोमा का आई हैव नो आइडिया, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा मैनेजर उसको निकाल रहा है, 10 जन के साथ खेल रहा है। नहीं, but I just had a discussion with Ajay yesterday only, I think. That was Ajay बताएगा, I think it will be better. Ajay क्या हुआ? So basically the opposition manager actually finished his substitution. So to make it fair, because you know how Roma gets treatment by the referees in Serie, so 10 में खिलाओ। मोरिन्यो अच्छी हरकत करे, कुछ हजम नहीं होता है ये सब, you know, if he starts being the nice guy bro, फिर तो मजा ही चलेगा ना यार। But I think it was great. I think it was amazing, because I also wanted to confirm कि भाई ये ऐसा हुआ था, that's why I asked, and it was unbelievable. Great move, and the rumors were what Manas you said, that I think Jose does not like Aouar, and things are not working. He's been very good in preseason. Aouar has been the creative spark that has been missing, you know, because last year we had no midfielder of his profile. Param, tell me the 10 players that you've signed that you were saying 10 गए 10 आए। 10 आए, मैं पूरा लिस्ट बनाया हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में भी नहीं रहते कभी-कभी। There is Carlos Augusto, there is Jan Bisek, another very young player, Jan Sommer, उसके लिए 3 हफ्ता रुका बायर्न से साइन करने के लिए। Davide Fratesi, Acerbi on a permanent deal, Marcus Thuram, Arnautovic, Stefano Sensi return from loan, Samardzic साइन करने वाले थे, पूरा डील कोलैप्स हो गया, और Lukaku of course, और maybe if things go right, Benjamin Pavard, because you guys must have seen the news. The deal hasn't collapsed based on, even if the reports are out there, so that's the last signing to replace Skriniar, because Skriniar has not been replaced yet. तो बहुत सा नए players, बहुत नए faces हैं। सब लोग there's no one that stands out. Don't get me wrong, सब अच्छे players लग रहे हैं मेरे को, but ऐसा कोई नहीं कि एक एकदम फाड़ है। Only thing I would say, Thuram on a free is a decent signing. I think like it'll be good value for money, because there's no money involved. But the point is, I think he can have a good impact in the team. I think only one that, if you want name-wise, that stands out only based on the name, is Fratesi, because he was a player almost every club wanted.
अजय को पूछो, वो तो रोमा फैन है, रोमा को चाहिए था, यूवेंटस भी इंटरेस्टेड था, एसी मिलान भी इंटरेस्टेड था. ही इज लाइक अ पावरफुल, ऑलमोस्ट टू पुट इट वेरी सिंपली, इज वेरी Barella-esque, टू पुट इट वेरी सिंपली. हाँ, तो that's the player everybody wanted. And the thing is, Roma, and the thing is, there was Premier League interest, but he just confirmed that he doesn't want to go to England right now. That is why Italian clubs had a chance to sign him. That's the only reason. So yeah, I mean, that's the only name wise that stands out. But other than that, I understand if neutrals are very unfamiliar with the name, that's fair enough. I feel we have a good squad. Agar aap bookmakers pe ke odds dekho, they put Inter as the Scudetto favorites, which I don't agree with. But bookmakers, I mean, it is what it is. So, or I don't think we got Nidhi's opinion on whatever Scudetto favorites, or at least one player he likes or whatever. यार करंट साइनिंग्स के हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि आई थिंक गैब्री वेगा इज द मोस्ट ऑब्वियस वन, जो सबको पता भी होगा. आई थिंक स्कमाका कैन बी अ गुड साइनिंग. यस, इंग्लैंड में उसका थोड़ा अंडरवेलमिंग रहा. एटलांटा के लिए ही इज अ गुड साइन. आई थिंक रोमा, अजय वांटेड टू साइन हिम. उसने बीच में बोला भी था कि प्लेइंग फॉर रोमा वुड बी अ ड्रीम और बहुत सारा. बट मोरिनियो के अंडर इट वुड हैव बीन अ नाइस थिंग टू सी इटालियन प्लेयर्स अगेन. प्रीमियर लीग वो नहीं चला, बट आई थिंक इज अ गुड साइनिंग. अगर तू ओवरऑल पूछेगा तब तो बहुत है यार. तब तो बहुत प्लेयर्स है सीरिया में जो बहुत अच्छा कर सकते हैं. बास्टोनी, राफेल लियाओ, बरेला, or at least one guy you're excited to watch, like new person to the league or anything. Scamacca and Gabri Vega. Gabri Vega, I think, is the common name, I guess. I think I am salivating on two players. Just Nidhi just mentioned Bastoni and Rafael Leao. Like I really like to watch both of them. I know they play in different teams, but Rafael Leao on his day, मैच विनर तो है ही, बट वो एक थिंग अबाउट हिम दैट यू लव टू वॉच हिम. यू नो, लाइक वो कुछ भी कर सकता है. आई रिमेम्बर उसका एक गोल चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल या क्वार्टर फाइनल में था, वो पूरा भाग के लेके गया. मतलब नापोली के अगेंस्ट योगेश, और नापोली के अगेंस्ट, एंड वो अंदर कट किया. वो व्हाट अ मूव. एंड बास्टोनी, आई थिंक निधि एंड मी, यू नो, लाइक सी लिवरपूल को एक लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक चाहिए. तो हम लोग I know, but that's where I was relieved उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया भाई, नहीं तो मुझे पक्का लग रहा था. एंड चैट में जैसे हम लोग बात करते हैं ना कौन लेना चाहिए, तो चैट में पब्लिक लिखती है कि व्हाई डोंट यू गो फॉर बैस्टोनी. एंड हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई यू आर डीलिंग विद इंटर मिलान, नॉट किएवो, you know, or Lecce, you know, like it's Inter Milan. He is Italian. He's playing at one of the biggest clubs in the world. I think last year तुम्हारे साथ वो बरेला के साथ हुआ. I think like lot of Liverpool fans Barella. I'm like, भाई वो he is the icon of Italian football. He's won the league. He's in the Champions League final. वो क्यों छोड़ के आएगा इधर? पर मानस में एक चीज बोलता हूँ, हमारा सिचुएशन ऐसा है नहीं कि अगर आप बराबर पैसा रख दो, then for anyone, the three players we consider not for sale are Lautaro, Barella, Bastoni. उसके अलावा anybody. बट अगर आप सही पैसा डालो थोड़ा, और थोड़ा प्रेशर डालो, तो we might just cave in just because of the financial situation, and we ourselves don't trust our management and ownership. So even if Barella, neither do we. So neither do we, bhai. Neither do we. Our ownership we don't trust. So वही problem है. fair enough. किसी ने डाला नीचे डिबाला का रिलीज क्लॉज. आई एम happy that it's over. There's no release clause, nothing, no shit like that. He's staying. You know, one EPL question, both of you guys, like, what is happening with Liverpool going for targets, and what is happening? Like, Caicedo का क्या हुआ? Because we all thought it's done with Liverpool. How did that get hijacked? Like, how was that last? Caicedo का मतलब वो देख, हम लोग का एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर था माइकल एडवर्ड्स. वो जब से छोड़ के गया है ना, things have gone to shit. क्या है कि there is this new guy, his name is Jörg Schmatke. पहले वुल्सबर्ग का स्पोर्टिंग डायरेक्टर था. बाय द वे, दिस इज अ गाय स्पोर्टिंग डायरेक्टर लिवरपूल का. लिवरपूल में रहता भी नहीं है, ठीक है. ही लिव्स इन इबिजा, राइट. और इजी जेट का, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, हां, इजी जेट का फ्लाइट लेके आता है वो जब काम होता है, फिर वो वापस जाके रहता है इबिजा में, फ्रांस में, आई थिंक बर्गंडी में कहीं पे. तो उसका ही हैज अ शैले, वहां पे रहता है, वाइन बनाता है. दिस इज द गाय वी हैव अपॉइंटेड एज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर. ही इज रिटायर्ड, ठीक है. The problem with Caicedo, what happened was कि Caicedo के लिए चेल्सी पीछे पड़ी हुई थी बहुत दिन से, राइट. हमने अचानक से, और वो 90+10 85 वो उनका चल रहा था इनके साथ, ब्राइटन के साथ. Caicedo ने ये जनवरी में ब्राइटन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था एक्सटेंड. तो
all the cards were in Brighton's hands. They said कि 100 million से नीचे हम बेचेंगे नहीं. हमने क्या किया, प्लेयर से थोड़ा इंकरेजमेंट लिया, प्लेयर ने बोला कि यस इंटरेस्टेड, व्हाटएवर, एजेंट ने जो भी गेम खेला, हमने जाके बिड कर दिया. ब्राइटन एक्सेप्टेड, क्योंकि जहां उनको 90 + 10 मिल रहा था, वी ऑफर्ड 111. ब्राइटन एक्सेप्टेड, बट वी वर नॉट, दिस प्लेयर हैड स्पोकन टू चेल्सी बहुत डेप्थ में, उतना हम लोग ने लेगवर्क नहीं किया था काइसेडो के लिए, और दूसरी बात कि ना हम उतना वेजेस देते. तो वहां से तो फिर जब आप अग्री कर लिया, बट काइसेडो सेट की नहीं, मेरे को तो चेल्सी जाना है, राइट. तो वहां पे एक प्रॉब्लम हुआ. उसके बीच में हम लोग बात कर रहे थे लाविया से. सो इट्स लाइक दिस, यू गो टू अ पार्टी, you are talking to this girl who's whatever, right, and you are like, okay, can I buy you a drink, वो सब तू सोच रहा है. Another girl passes by, prettier, you go and approach her. What you didn't see कि उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड भी आ रहा है पार्टी में. तो वहां से तू रिजेक्ट हो गया, और ये लड़की ने भी देख लिया कि तू उसके पीछे जा रहा था ना, अभी तेरे को मैं भी, I won't have that drink with you, which is what happened with us and Lavia. Because Lavia, you were linked with him. Yeah, exactly. And Lavia तो बहुत कम से. And we did the legwork. He wanted to join, but हुआ क्या कि उसने देखा कि अच्छा तुमको मतलब, और साउथहैम्पटन ने भी बोला, हाँ, और साउथहैम्पटन ने भी बोला कि यार तू हमसे 4 मिलियन 3 मिलियन के लिए तू, यू आर हैगलिंग अराउंड विद अस, वहां जाके तुम 110 मिलियन बिड कर रहे हो. So they also said कि screw you. So this is what this is मतलब this is naivete 101. ये this is what happens when आप एक मतलब इनएफिशिएंट, चलो मैं गाली तो नहीं दूंगा, मतलब आप माइकल एडवर्ड्स से आपने इसको रिप्लेस कर दिया ना. मतलब ये बंदा यार रिटायर होके रिटायरमेंट मना रहा है, इसको आप बनाओगे तो यही सब होगा. नहीं, so what happened, हमने एंडो साइन किया फ्रॉम स्टुटगार्ट नाउ फॉर 19 मिलियन. it's a very it's द पॉइंट इज, जैसे माइकल एडवर्ड्स छोड़ा, उसके बाद जूलियन वार्ड आया, जूलियन वार्ड भी छोड़ दिया, तो नाउ वी वर लाइक कि क्या करें. ओके, देन वी हैव अपॉइंटेड दिस गाय ऑन अ 3-month डील. आपने एक पार्ट टाइम स्पोर्टिंग डायरेक्टर हायर किया है जो रिटायर हो चुका था. आई एम नॉट जोकिंग. क्लॉप का, सो वो ही वाज नॉट वर्किंग भाई. क्लॉप ने बोला इसको ले आते. बेसिकली क्लॉप का दोस्त था, इसलिए वो आ गया, और ये सब हगांड इसके अंडर हो रहा है बेसिकली. एंड see, the reason why Liverpool अच्छा कर रहा था over the last 4-5 years is because हमारा फाइनेंशियल पावर नहीं है लाइक्स ऑफ चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी, अभी आर्सेनल भी. द ओनली रीजन हम लोग अच्छा कर रहे थे इज बिकॉज हम लोग एक बहुत वेल ऑयल मशीन थे. एक अच्छा फील गुड फैक्टर क्रिएट हो गया था ऊपर से. अभी माइकल एडवर्ड्स, सो हमारी टीम में माइकल एडवर्ड्स, इयन ग्रैम और योर्गन क्लॉप थे. इयन ग्रैम रिसर्च, माइकल एडवर्ड्स स्पोर्टिंग डायरेक्टर, योर्गन क्लॉप मैनेजर. कुछ तो लफड़ा हुआ है, पता नहीं. 2 साल पहले माइकल एडवर्ड्स और इयन ग्रैम ने बोला नहीं कर सकते हम अभी काम, वो छोड़ के चले गए. फिर जूलियन वार्ड आया. जूलियन वार्ड विद इन मंथ सेड आई कांट वर्क, आई एम लीविंग. सो देयर इज समथिंग ब्रूइंग. क्या वो क्लॉप को ज्यादा पावर मिल गई है, या क्लॉप खुद सब डिसीजंस ले रहा है? बिकॉज अभी सब न्यूज बाहर आ रही है कि क्लॉप चाहता था हेंडो को 2 साल पहले निकालो, और किसको लाए? क्लॉप ने माइकल एडवर्ड्स चाहता था कि ब्रूनो गोएमारेस, जो बहुत सस्ते में मिल रहा था, नहीं किया. फिर क्लॉप बोल रहा था जीनी वाइनाल्डम, वो माइकल एडवर्ड्स बोल रहा था जीनी वाइनाल्डम को अभी निकालते, और किसको लाता है? एंजो, जो हम लोग को 15 मिलियन में मिल रहा था रिवर प्लेट से. क्लॉप ने अपैरेंटली नहीं बोला. सो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हम ये सिचुएशन, अब ये सब स्पेकुलेशन है, 100% तो कोई बोल नहीं सकता. बट देयर इज सम फकरी जो हुआ है, और वो दिख रहा है, और अभी दिख रहा है. So this is unfortunate. Sorry Chintan, and because of which we did something so uncharacteristic, we bid 110 million for a player. That is the most desperate Liverpool has been under Jurgen Klopp. Maybe it's a sign, maybe it works out for us because it is so unlike us, bhai. In a way I take pride कि मेरा क्लब ऐसा नहीं करता. तू समझ रहा है कि because I think this is what तुम लोग को जो हुआ है मिलान के साथ हुआ, but we just had a bigger name link which is Maldini. I think कुछ discrepancy की वजह से चला गया है. Sometimes you need that power. Sometimes coach या manager को ज्यादा power मिल जाता है.
I guess that is where the discrepancy comes. But I think it worked out fine because when you bid 110 for a player, that means other clubs know that you can shell out this much money. Correct. So what happens is they're going to milk it. I think no chance. And Yeah. Lavia also 60 million. I follow EPL, of course, here and there. When I hear all these numbers, it's unbelievable. And Lavia 16 million. And It's get like, to look out. And they paid Tonali ka 70. Like, what are you comparing a Yeah. Milan player Tonali yeah. and It's Lavia like ka 60? two to Out of one my head. BH, 1 BHK. If you try to buy a 2 BHK in Kolaba compared to a 2 BHK in Warsaw, price difference होगा. So Yeah. Premier League Kolaba बन गया for some reason. मतलब सब कुछ महंगा है. Everything मतलब is just too expensive for no reason. I saw भाई Caicedo has played one entire season. 110 115 million में गया. When I read recently a Serie का जो players आते हैं उसका value, of course Liao is very expensive because he's become a household name now. Yeah. They quoted Lobotka as 50 million. Yeah. Bhai, you are people are bidding 100 million for Caicedo, 60 for Lavia, and you think Lobotka is for 50 million. क्या joke है यार ये तो? I think just guess the total amount spent by Roma this summer. Guess karo. 5 million. Nidhi, 10 million. it's 4 million. I was closest. I think what Chintan said here, point of discussion interesting, because I remember we were trying to sign Balogun from Arsenal, and yes, he's young, but he's technically not even part of their project, as Arteta has said. He had one good season in France, and they were quoting 40 plus, around close to 50 million. And when Newcastle approached us for Barella, not a bid, but just information, they only wanted to pay 60 million. So like stuff like that, there's a lot of discrepancy, as Chintan said. So I mean, Barella is easily, it should be close to 100 million. Why not? So at least in my opinion, probably one of the top 5 midfielders in the world right now. Yeah. So 60 million for that, and then when you go to Arsenal for Balogun, their fans got offended when we only bid 30 million. I was like, that's the budget we have. I'm sorry, that's the best we can do. So yeah, I mean, what Chintan said is spot on completely. जो बारसा 3.5 million लिख रहे हैं, apologies, but the reality is आपने उसके पहले जो खर्चा किया है उसका क्या? मतलब one window you are having bad, and my heart is financial levers क्या हुआ? Good lever. my heart is genuinely with y'all. I know it's a tough pill to swallow, but आपने Griezmann, Coutinho, Dembele, अभी एक भी player नहीं आपके क्लब में, और ये recently हुआ है. Like, but they got Gundogan for free, so I don't think I'll be very happy if I spend 3.5 million and get Gundogan for free, man. Gundogan तो भाई Gundogan is still is. Prithvi Singh, why are you mincing your words? Manas by journals have widely reported Klopp and Linders have overpowered Edwards and company and let them go, which is backfired spectacularly in hindsight. Prithvi, I have not minced my words. I have said that, but I am saying I don't believe it wholeheartedly. फिलहाल मैंने बोला apparently ये है, जो जर्नलिस्ट ने भी apparently बोला है ना, उन्होंने वीडियोस थोड़ी लिखाया है कि बिग बॉस का थोड़ी शो चल रहा है कि एंड मतलब कुछ तो गलत हुआ है, मैं जानता हूँ, इससे तो मैं मेंशन कर रहा हूँ भाई. Yeah, but things are not the best at a club at the moment. लगता है top 4 के title challengers. I think top 4 Liverpool should be a joke. Challenge पागल है क्या? Title तो बहुत दूर है भाई. नहीं यार, I think but there's something about Liverpool, when they play, I think every team is worried, especially Champions League तो अलग चीज है, you guys won't be playing, but there's something about Liverpool when you guys play, there are chances that you can win the game from whenever. And against Chelsea also we saw a decent game tha. Of course Chelsea had their bits, but Chelsea had a lot of young players, but I think something can happen when Liverpool are playing. And another thing I was going to ask you, I thought before the show I'll ask you, यार ये Mohamed Salah क्या, is he linked to Saudi? And what was that reaction when he got subbed off? I've never seen him like this in my life. Like, he accepts everything, but he was so pissed off. देख उसका रिएक्शन तो मुझे अच्छा लगा यार, उसका रिएक्शन तो मुझे अच्छा लगा. देख, आई थिंक दैट सब्स्टिट्यूशन वाज थोड़ा वियर्ड, क्योंकि 1-1 स्कोर है और तू सलाह को हटा के बेन डोक को ला रहा है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बेन डोक यार बहुत यंग प्लेयर है यार, वो चेल्सी अवे 1-1 स्कोर है ना, ऐसा नहीं है ना कि 4-0 है.
कि तू मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए, मतलब कि दूल्हे के साथ भतीजे को भी घोड़ी पे चढ़ा दिया, वो बात नहीं है ना यार। मतलब इट्स लाइक 1-1 स्टैमफोर्ड ब्रिज अवे, ठीक है। तो वहां पे वो भड़का, वो मेरे को ठीक लगा। नाउ साला टू सऊदी, देखिए इनएविटेबल है यार चिंता, एट सम पॉइंट इट विल हैपन, नेक्स्ट सीजन, उसके बाद वाला सीजन, व्हाटएवर, इट विल हैपन, राइट, बिकॉज उनके लिए सलाह से बड़ा साइनिंग हो नहीं सकता है। ही इज द बिगेस्ट अरब प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, इफ दे विल गेट सलाह, ठीक है। इवेंचुअली हम लोग भी जानते हैं कि वो जाएगा सऊदी, कब जाएगा वो पता नहीं। तो बट वो रिएक्शन एंड दैट सऊदी लिंक इज नॉट, दे आर नॉट कोरिलेटेड। Yeah, hope not, man. Because I want Mo to win one more league personally, and eventuality है, जैसे हम जानते हैं कि he's the biggest Arab footballer on planet Earth. It is that any team, I want Mo to sign a year का extension right now, so that we get a hefty amount. देख यार वो, he's Mohamed Salah, he's going to play for the Saudi League. Everyone is going over there. उनके लिए जैसे निधि ने बोला, उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं होगा. He will become the face of the country. He will become the face of the league. सब कुछ हो जाएगा. कोई यार, and also like when it comes to that reaction, I want my main man to be that angry when he's substituted. So 100%. I'm totally okay. I'm not worried about that. यार एक योगेश से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. योगेश, रूडी गार्सिया, नापोली का सिस्टम वाज टोटली डिफरेंट अंडर मोहनदास करमचंद गांधी, वो तो बात ही अलग थी. राइट. हंस क्यों रहे हो भाई, वो गांधी तो दिखता है पूरा, राइट. तो उसका सॉरी, he is African. Egypt is an Arab. आदित्य, ओके लिसन, इजिप्ट जो है ना, अभी आप थोड़ा जियोपॉलिटिक्स सुनो. अब आपने ये सवाल पूछा है तो अब आपको जवाब मिलेगा. इजिप्ट जो है ना, वो जियोग्राफिकली इट इज पार्ट ऑफ अफ्रीका, बट द ओरिजिन ऑफ द पीपल आर आल्सो अरेबिक, राइट. सो बहुत सारे कंट्रीज हैं, नॉट जस्ट अफ्रीका में, नॉट जस्ट इजिप्ट, बट एथनिकली, बिकॉज एथनिकली a lot of those people are considered Arab, ठीक है. सो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि जियोग्राफिकली जो जहां है वो वहीं हो गया, राइट. सिनाई पेनिनसुला का नाम सुना आपने? तो सिनाई पेनिनसुला हैज बीन डिवाइडेड. तो वो जो एक पार्ट है ना, वहां से माइग्रेशन बहुत हुआ था. सिनाई पेनिनसुला, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो इजराइल के पास जा चुका है, वो दूसरे कंट्रीज के पास रह चुका है, फिर वो वापस इजिप्ट को मिल गया. So he calling him Arab is not wrong. Loved it, Nidhi. Loved it. Nidhi bhai ne pura. He's absolutely right. I was actually intently listening. He's absolutely right. Geopolitics. Yeah. Lesson here. तो उसको why would anyone know better about Mo Salah than Nidhi and Manas? So yeah. And I know when Benacer was born, and जब भी you said about Mohamed Salah leaving, मेरे को भी थोड़ा 2 मिनट अंदर से रोना आ गया, because I have a feeling Benacer might go too, man. He's Algerian and I have a feeling वो भी Saudi जाएगा eventually. Even Algerian are Arabic. I mean, yeah, I was just going to say even Algerians are Arab. Yeah. तो जैसे मारेज भी अरबिक, exactly, क्योंकि है तो वो अल्जीरियन, लेकिन वो भी जियोग्राफिकली तो अफ्रीका में है, लेकिन तो वो भी, उसको भी एथनिसिटी एंड जियो लोकेशन अलग अलग चीजें होती है, राइट. सो दैट इज द रीजन. एनीवे, आगे बढ़ते हैं यार. तो वापस आते हैं. अब जियोपॉलिटिक्स की बात की है तो गांधी की भी बात करनी पड़ेगी. तो गांधी जी तो छोड़ के चले गए हैं, तो आपका जो हिंसक स्टाइल था, आर यू एक्सपेक्टिंग एनी चेंज, रूडी गार्सिया? एंड सेम क्वेश्चन टू अजय. देयर इज एक्चुअली, लेट मी स्टार्ट दिस विथ यू. What do you think रूडी गार्सिया कैसा फुटबॉल खेलने वाला है? वो नापोली के पास प्लेयर तो एक से एक है भाई. रूडी गार्सिया is the biggest fan of 4-3-3. वो एक ही फॉर्मेशन खिलाता है from the times of Lille when he played Hazard, false nine, Gervinho and Moussa Sow. So that was his front three, and he had Johan Cabaye in midfield, Pjanic तो रोमा में है. So basically very very classical 4-3-3. He can either play with the target man up front like Osimhen, and a lot of importance for the wide players.
and in midfield he needs a proper 6, 8, and 10. That is his style, and the wing backs are going to bombard forward, so it's going to be attacking football for sure. And so, in terms of playing style, not a lot different from Spalletti. I mean, ironically, when Rudi Garcia was with Roma and when he got sacked, Spalletti came and took over, and now it's vice versa that's happening. So as I told earlier as well, decent manager, but after he's roamed about so much, and not really achieved. I mean, he couldn't. He had issues with Ronaldo at Al Nassr, so maybe he's past his prime as a manager. Only time will tell. They messed up the league title. What are you expecting under? यार प्री सीजन के मैचेस देखे, काफी अच्छा लग रहा था. रास्पेडोरी लास्ट ईयर इतना यूटिलाइज नहीं कर पाए, बट रास्पेडोरी ने यूवेंटस के अगेंस्ट क्या गोल मारा था वो अभी भी दिल के करीब है. रास्पेडोरी को स्टार्ट करा रहे, राइट विंग पे खिला रहे. ही इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रेकॉर्टिस्टा स्टाइल ऑफ प्लेयर है, बट राइट विंग पे खिला रहे. तो यार डेफिनेटली ही इज लाइक वेरी इनटू 4-3-3. एंड बट हमारे पास में 4-2-3-1 के खिलाने के लिए भी प्लेयर्स आ गए हैं विद कैलुजेस्टे coming in. Anguissa and Calgeste, two defensive in front of defense खेल सकते हैं. तो यार like आज मैच स्टार्ट होंगे आफ्टर लाइक एटलीस्ट इंटरनेशनल ब्रेक जो आएगा सितंबर में. 3-4 मैचेस हो जाएंगे, उसके बाद में थोड़ा आइडिया लगेगा कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. बट फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम होपिंग दैट एटलीस्ट until April we are in the title contention. I think, but I want one question for everyone is, sometimes when you have a squad like Napoli or a City, do you think changing a coach and getting someone, even if it's underwhelming, as Ajay said, makes it thoda easier? Because half the thing to the team is so well drilled. Spalletti इतना drill करा दिया टीम को. जैसे अभी Pep Guardiola जाएगा, Klopp जाएगा. Sometimes you just need to get someone with a similar mindset. It becomes easier for a team to run. Do you think that is the case, or at times, like suppose if Milan gets taken over right now, he might have to start someone fresh. But like someone taking over Klopp, you get someone like a Nagelsmann, just for example, who believes who's in this gegenpress kind of era. Do you think that becomes easier because उसके पास set system है यार, players तो है system के लिए, तो easier to run. जैसे गार्सिया के लिए शायद easy हो जाएगा. मानस क्या बोलता है? गार्सिया के लिए हो सकता है because the team has just started to peak. They've just won. फिलहाल लिवरपूल इज इन एरा ऑफ पीरियड ऑफ रिफ्रेश. हमारा पूरा मिडफील्ड चेंज हो गया. नेक्स्ट ईयर हमें साला वैन डाइक के इश्यूज एड्रेस करने. सो बट टू आंसर योर क्वेश्चन, या अभी जैसे सिटी का अगर तू ले ले और नापोली का ले ले, तो द पर्सन हु कम्स इन नाउ विल हैव अ रिलेटिवली इजियर जॉब. नॉट एट लिवरपूल, क्लॉप का एग्जांपल आई थिंक फेयर नहीं है, बट सिटी के लिए इट इज. I meant peak Liverpool, as in जब peak Liverpool Yeah, था, yeah, if he yeah, sets a yeah. team and goes, I guess Yeah, that becomes I think सिटी के लिए मुश्किल होगा because Pep is, I hate to say this, the best manager in the world right now. ये कोई लोग हिस्ट्री में भी बोलेंगे. अब वो अप फॉर डिबेट है, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ. बट मेरा पॉइंट ये कि उसका जो प्रेजेंस है ना, वो स्पेलेटी से बहुत ज्यादा है. तो my point is just Pep being there makes a lot of things happen. The way he runs, उसके पास power है to run A to Z पूरा. Yeah, that is it. But I meant from the tactical point of view कि easy हो जाता है. I think more or less easy for. पेप की टीम में नहीं होगा, इजी नहीं होगा मेरे लिए, बिकॉज वो पेप है. स्पेलेटी की टीम में हो सकता है. अजय माइट डिसएग्री विद मी. अजय बोल रहा, योगेश माइट डिसएग्री विद मी, बिकॉज सिस्टम, बिकॉज सिटी का क्या है ना ब्रो, हमने 6-7-8 साल से देखा है ना. सो द आई डोंट नो हाउ इट विल चेंज. नापोली का एक ही साल देखा है. सो मे बी द प्लेयर्स आर स्टिल ऑन द सेम बोट, यू नो, लाइक सेम विजन है अभी भी, सेम मोटिवेशन है. तो मेरे हिसाब से द ट्रांजिशन फॉर नापोली राइट नाउ कुड बी इजियर कंपेयर्ड टू सिटी का अगर नया मैनेजर आता है. तो आई थिंक चिंतन के पॉइंट को दो तरीके से देख सकते हैं, इन द सेंस कि रूडी गार्सिया, एज अजय सेड, टैक्टिकली दैट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, नॉट टू मच, बिकॉज उसके पास वो प्लेयर्स है. बट रूडी गार्सिया का मेन क्वेश्चन आता है एज अ मैन मैनेजर, बिकॉज ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग अ बिट hot-headed, and then when you mix that with Aurelio De Laurentiis, that's another issue over there. So I think with the players, then that becomes an interesting dynamic, because
Spalletti could command Kvaratskhelia to get him to play the way he did in one season itself, in his first season. Then you have a question whether can you now. Kvaratskhelia is currently injured. Then now it's up to Rudy Garcia कि Kvaratskhelia को uplift करे, injury से बाहर लाए, यानी कि उस पे work करे. Same with Osimhen. Osimhen, I think many people भूल जाते हैं कि बहुत injury prone player है. I think योगेश will agree, injure होता है इधर उधर थोड़ा. तो I mean I think it's a question of whether Rudy Garcia can handle these dynamics or not. Again, as Yogesh said, they signed Nathan, a completely new center back to replace Kim. But the way Spalletti helped these players adapt in season one, Kvaratskhelia, Nathan, Kim Min-jae, sorry, can Rudy Garcia do that with Nathan? Can he do it with Kahuste? Can he do it with any other new signing they make if they do? That's, I think, the make or break for Napoli going forward. योगेश, वन जीसस है क्या अभी भी? हाँ है ना? Yes, Johan Jesus तो आज स्टार्ट करेंगे यार. रोमा के प्लेयर्स और मैनेजर्स अच्छे चल रहे हैं नापोली में. Guys, before we end it, बहुत टाइम से बात कर रहे. Thank you so much. More than 400 people still watching us. Stream को like करिए, subscribe करिए to Menace in the Monk if you want to see these beautiful human beings and handsome hunks on the channel once again. But before we let you go, yaar, starting with Ajay, I need your top 4 prediction and one outrageous prediction this season. Outrageous mean it could be like Lazio winning the title. it could be that. Yeah, it could be it could be a player who just becomes the best player of the season. Or like I think, for example, Osimhen flop. I think Ajay के लिए if Lazio winning the title, the word is not outrageous. It's not outrageous, man. It's it's sacrilegious. Sacrilegious. Absolutely, man. No, I feel. Let me start with the outrageous. I think Atalanta are going to be in the title race this year. Ooh. In the title race, I feel that this year Gasperini is going to get it done because they've been underwhelming for some time now, and this year they're starting a new cycle. They have no European competition. They've signed CDK from Milan, Scamacca up top, and they still have that depth. So I feel that they're going to be in and around the title race. That's my outrageous prediction. Juve, I feel, are going to win the league this year. Okay. No Europe, nothing, no pressure. They're going to win the league. So top 4, Juve, Napoli, Atalanta, and one of the Milan teams. I feel that Rudy Garcia is going to crash and burn mid in the middle of the season. Wow. And Napoli are going to probably bring in someone. Wow. Damn. Okay. Param. Good start. Good. Param. So मैं एक चीज क्लैरिफाई करता हूँ कि मैं जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक कुछ प्रेडिक्ट नहीं करता, बट आई विल डू इट एनीवेज and hopefully you guys give your predictions in the end. But I think I agree with Ajay that Juve will win the league. I have a bad feeling they will. I think second, despite the multiple changes we have made in the team, I think Simone Inzaghi really wants that Scudetto finally. I think I think this has to be that season. He even extended his contract. I think finally he will do well, but he'll just miss out on it, I think, to Juventus. So second, us. I think AC मिलान को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है लोगों से. दे फील दैट कि बहुत सारे नए फेसेस हैं उन पे, बट आई थिंक दे हैव प्लेयर्स लाइक चुक्वेज़े एंड ऑल हु आर वेरी गुड, बट आई स्टिल फील वो एक अडैप्टेशन पीरियड, मे बी आई थिंक वील हैव इट बेटर ऑफ देन देम, सो मे बी देम इन थर्ड. एंड फोर्थ, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक रोमा will make it. Sorry Ajay, I think Napoli will be there. I think, although in terms of his outrageous prediction, I agree that Atalanta, I feel, will be very close to Napoli. I think they have refreshed that cycle that was closing for them. Gasperini was supposed to leave, but they've gotten a whole new squad almost pretty much. So I think वो refresh हो गया. And I think for outrageous prediction, mainly I think two things I'll say. I think either Lazio, Scudetto, because I said it before, surprisingly, or Simone Inzaghi walks out halfway through the job or by the end of the season despite extending his contract. Some no one sitting on the fence. Yogesh, तेरा top 4 और एक भारी भरकम prediction. Can't hear you. Mute. Can't hear Mute you. पे तू. Sorry. अच्छा म्यूट पे था मैं. ऐसा क्या बोल रहा था? मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी. इतना sophisticated answers दे रहे योगेश, एकदम मैनेजर जैसा. नहीं यार, Napoli for the title 100%. Second, third, fourth, I don't know. Maybe, but I think Roma and Lazio second, third, and only one of AC Milan. कहाँ से?
क्योंकि यार अरे रोमा मूरिन्यो की वजह से इंटर एंड एसी मिलान ने इतना सारा मिक्सअप कर दिया, तो इट इज looks like chaotic from outside. I don't know, but it looks chaotic, so they might go for a toss. And prediction आप यार यूवेंटस वापस से like 8th पोजीशन पे फिनिश करवाओ यूवेंटस ये जूसोली outrageous का वाला इतना था। गुस्सा आ गया। हाँ, देखो देखो, आउटरेजियस प्रिडिक्शन ऐसा ही होना चाहिए ना, लाइक आउटरेजियस Yes, प्रिडिक्शन में that यू is डोंट there. नीड सेंस, you need yeah, just gut exactly, feeling. exactly. हाँ, or what you want. चिंतन। चिंतन, I have always been saying since the past 2 seasons that I always think that Inter Milan have a good squad, and I feel last year they messed up somewhere. And Napoli, like Milan the previous season, punched above the level for a while. Napoli, with however great the squad was, were outrageous in the first half of the season. That's why they did very well. So my prediction is going to be I think Inter are going to win that title again because two reasons. One is always, as I've been saying again and again, Barella. If he stays fit and as he always is fit, if Barella is there, Bastoni, Barella, and Martinez, if they are there and they are clicking, and two teams which Napoli struggled against in the league were Inter Milan and AC Milan last season. With AC Milan, they had a huge margin loss. I'm talking about the league, not the Yeah. and against Inter Milan. There's something about how Simeone Inzaghi sets himself up that they're difficult to beat. So I'll go for Inter with the title. I think Napoli and Milan will finish second or third, either ways, because I feel just as Yogesh said about Inter Milan, I feel that might be the case with Napoli. That one change of Spalletti and Garcia might be the thing that which tricks them in not winning the title. Defend नहीं कर सकते जैसे रोमा अजय बोला that यार mid season there might be some scandalous thing कुछ हो जाएगा दोनों के बीच में तो ऐसा हो सकता है. And I feel fourth will be Juventus. I still feel Juventus at fourth might be a little low, but I'm just going by what the form is and how the teams are set up. But my outrageous thing would be I can call it outrageous or no, but I feel Juventus are should win the title because they have nothing to play for. There are no expectations from them, and only however big Milan is or all the other clubs are. When it comes to Serie A, Juventus are the biggest clubs. You know, when it comes to winning the league titles, that is why the gap is huge. And Allegri has won it. He knows how to win it. I feel if outrageous style रहेगा कि अगर Juventus जीतेगी, my outrageous prediction is they're going to win by a huge margin. wow. Damn. Wow, this is the best thing about this panel. One has gone for Lazio, one has gone for Napoli, one's gone for Juve, and one's gone for Inter. So I think 4 different predictions. आ ही Two गई. Juve, even I'm going for Juve. Two Yeah. Juve. Now it's time for you guys, man, to predict. Yeah, I will say मेरे हिसाब से Napoli is winning the league. Then the second, third, fourth will be distributed between Juventus and the Milan clubs. Okay. My outrageous prediction is that Lukaku will kiss the Juventus patch this season. वो तो होने वाला है भाई उस पे outrageous है. Wow, man. And to make matters worse, अभी outrageous है ना, मैं मसाले के लिए बात कर रहा हूँ कि अभी तक तो साइन भी नहीं किया है. He will kiss the Juventus batch ये season और वो जनवरी में इंटरव्यू देगा. इंटर के अगेंस्ट हैट्रिक मारेगा. Oh, nice. अरे अब ये तो बोला है निधि बाकी और चैंपियंस लीग का भी बोल दो यार क्या लग रहा है चैंपियंस लीग में भी. सीरिया का देख तुम लोग ने डिस्क्राइब कर लिया तो टॉप 4 तो आई थिंक आई एग्री विद मोस्टली एवरीवन. आई स्टिल थिंक नैपोली आर स्ट्रांग बट आई एग्री यूवेंटस जीत जाएगा बिकॉज आई थिंक अभी उनका लेजर फोकस रहेगा. टॉप 4 आई थिंक एटलांटा इज इन देयर विद अ शाउट. इंटर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर एंड फोर्थ मैं रोमा को रखूंगा बिकॉज मेरा थोड़ा बायस है. ठीक है और आउटरेजियस रोमा टू विन द टाइटल. Even if we lose, of course, if Roma wins, other rule, but Roma title जीतेगा ना बहुत मजा आ जाएगा. To be very honest, मेरे को कोई एजेंट है क्या? मेरे को थोड़ा बायस है. I'm being You're a big Totti fan, right? I'm a huge Totti fan.
I'm a huge Totti fan. तो मेरे को थोड़ा biased है. And I love the fucking kits Roma make, man. Like Roma के But जैसा kits I don't think anybody makes. But ये सीजन इस का बार थोड़ा थोड़ा- होम वाला डिसअपॉइंटिंग इस नहीं बार लगा? थोड़ा हक दिया. इस बार थोड़ा हक हाँ, दिया. I think two clubs make the best kits. One is Roma, and I really like Arsenal kits also. क्या बनाते हो but ये kits? हाँ, but इस But साल Roma कुछ kits are तो तो- सर्कस का, हाँ, इस साल जो अवे किट है वो थोड़ा सर्कस का यूनिफॉर्म है, but ठीक है. I Otherwise think they I make think good. I think मिलान best का home away kit uniform देखो, मिलान हाँ, का वो sorry, होली third kit देखो, होली pink और क्या क्या होली, हाँ होली यूनिफॉर्म है ना? बनाया है. But अच्छा है वो. I like it. I think consistently Napoli have the best kits this season. बहुत clean और Which When one? was- either kit. when was that military one? When was that military one? Which season was that? It was unbelievable, that military kit, yeah. हाँ Yeah. टाइम हो गया 2-3 सीजन पहले था. एक डेनिम का भी था ना, एक तुम्हारा डेनिम किट. हाँ, लास्ट सीजन 6 की 8 किट्स निकाले थे. इस बार 11 10 निकाले थे है, भाई तुम लोग. इस बार 10. हर एक just to throw the cat amongst the pigeons. मैं एक चीज मैं बहुत मतलब एक दिन कुछ दिन पहले ऐसे किसी ने रील भी बनाया था और मेरे को हमेशा से ये लगता था, I don't think Villarreal nobody has seen them wear an away kit. I think Villarreal वो करते ही नहीं है, उनका कोई away kit नहीं है. Oh yeah, I've never thought of it also, man. Oh shit, कभी सोचा भी नहीं था यार मैंने ये तो. Yeah, I saw that. Villarreal वो don't वो have अवे निधि वो अवे मैच नहीं खेलते. इल्यूमिनाटी है पूरा वो. उनका मतलब वो इल्यूजन है पूरा. Like I said, you know, the season when they were in the semi-finals, I think against Arsenal, ये मैंने किधर ये पढ़ा था. I don't know how big Villarreal is as a place, and then the entire 90% of the population were at London. They had gone to London to see the game. Yeah, it's not that big. It's not that big. I was like, हाँ, wow. they are very- ये Champions League का क्या यार? Champions League बता दो. यार हमें क्या लेना देना. Europa League final, Liverpool Roma. किसी ने लिखा था? लिवरपूल रोमा Roma's revenge. I meant एनफील्ड में खेलना है यार चैंपियंस लीग का एक मैच वापस से इस बार नापोली. तुम लोग को तो आदत हो गई ना हर लास्ट 2-3 साल में तुम आते ही हो. तो एक काम करो यूरोपा लीग के लिए आ जाओ. रेलीगेट हो जाओ नीचे आ जाओ. But yeah, you guys are playing Europa League. तो जिधर भी लिवरपूल खेल रहे हैं ना, I think कॉन्फ्रेंस या यूरोपा वो तो उनका ही टाइटल है. I think वो तो no one can beat them over there. कॉन्फ्रेंस मत बोल यार प्लीज भाई, यार. भाई, डोंट भाई, मेंशन यहाँ- दैट बोल यार. मतलब यहाँ गाड़ी में हवा कम है, तुम बोल रहे हो कि तुमको मतलब गोवा जाना है, हम मलाड पहुंचने के चक्कर में. तो नहीं, I feel like अगर मेरे को लगा यूवेंटस कॉन्फ्रेंस होगा तो यूवेंटस जीत जाएगा. तुम लोग यूरोपा लीग जीत जाओगे. देख चैंपियंस लीग सिटी आई थिंक वंस अगेन. They have everything. Yeah. यूजुअली आई वुड पुट रियल मैड्रिड का नेम देयर बट मिलिटाओ कोर्टोवा बहुत टाइम के लिए बाहर है. बेंजेमा छोड़ के गया, उसका रिप्लेसमेंट होजिलू है. सो रियल मैड्रिड ये बेलिंगम श्योर आया है बट द पॉइंट इज उनके मेन सेंटर बैक बाहर हो गया, गोलकीपर बाहर हो गया और बेंजेमा चले गया. तो स्पाइन ऑफ द टीम इज वीकिश अभी. तो आई विल नॉट पुट रियल मैड्रिड एज अ क्लियर फेवरेट्स फिलहाल. बार्सिलोना का I don't know भाई, too early to call. Lewandowski का form थोड़ा ऊपर नीचे. Bayern is always there. Bayern, Harry Kane ने assist और गोल भी मारा था. But my outrageous prediction over there is Inter Milan और Napoli दोनों में से एक टाइटल ले जाएंगे. Champions League 100%. Today this year my outrageous prediction this year is going to be I think a winner which no one can expect. Yeah, I mean Arsenal, even if नहीं यार. I think अरे यार अभी I have a lot of Arsenal fans as friends. कुछ बोलना नहीं है. But I think Arsenal, I think उनका जैसे नापोली का last year था, उनका 1 point agenda रहेगा. I think they won the league first. But yeah, another thing before we go off यार, एक बहुत funny चीज मैंने किधर पढ़ा था by all the pundits, and I think all of my Serie fans friends will laugh at it. यार ये क्या था यार, when Harry Kane wanted to leave, why were the pundits saying that the record PL record was more important than a title? ये क्या? What is this bubble people are living in? I have no idea. इंग्लैंड में बहुत bias है. I feel Liverpool fans, and not just saying because you guys are there, because Liverpool fans hadn't won for so long. तुम लोग सबसे ज़्यादा realistic लगते हो. But how is winning title even in Belgium more important than the highest goal tally? It's out of my head. I couldn't believe it that some people were saying that Harry Kane should stay and break this record. And first of all, I don't even think Alan Shearer is the highest English goal scorer, as in highest goal scorer in England league. He's not. EPL चालू हुआ 93 में यार. मतलब people forget all these things. It's unbelievable. I guess you guys will agree.
ऊपर जो like Napoli, like I think all of you guys. देख ब्रो चिंतन इसमें क्या है, what they were trying to say is that कि everyone हर साल 15 से 20 जन 100 कंट्रीज में लीग जीतता है, ठीक है, बट प्रीमियर लीग का ऑल टाइम गोल स्कोरर एक ही होता है, सो उसका वैल्यू भी है। उनका कहने का मतलब ये कि अगर हाइपोथेटिकली हैरी केन till he dies supposedly is the all-time goal scorer of the Premier League and he doesn't win a trophy supposedly, you cannot say उसका career failure हुआ है because he is the all-time leading goal scorer. I know it's a team game, you have to win trophies. I get both sides of the story. उनका कहने का मतलब ये था कि if he becomes all-time he's immortalized, but यार वो सिर्फ प्रीमियर लीग होता, अगर यूसीएल का टॉप स्कोरर होता ना ऑल टाइम तो भी मैं समझ लेता। आई थिंक मैं तेरी बात भी समझ रहा हूँ, बट उनका मेरे को जो पसंद नहीं आया ना, what they were saying was that बायर्न जाके क्या फायदा, वो मेरे को डिसरिस्पेक्टफुल लगा, वो was disrespectful. I think Michael Owen said it. I think it was they were ridiculing Bayern, and I think my personal opinion, I don't know about everyone else, Bayern at the moment is the best run club in the world. I think if you go to see revenue wise, everything, I think they're one of the best, well-oiled clubs, and they've been here and there for a very long time. So to disrespect a club, थोड़ा उनका डोमेस्टिक डिस्प्यूट चालू है, लेकिन one of the best happens everywhere. Yeah, that happens almost everywhere. But if you consistently past 20 years में देखोगे, Bayern is probably one of the best run clubs in the world, where it's a pride to play for Bayern. The league, I think people were assuming जो Michael बोला कि league title तो जीतने ही वाले, but I don't think they took pain for the league title. But then that's the point, right? But that's the point. Kane hasn't won anything, and if he goes and wins there, that's his first ever trophy. So that matters a lot at the end of the day. And another thing is the whole agenda that English players don't leave EPL. अभी हो रहा है because we have so many English players. I think Abraham ने चालू किया था Exodus. That landscape is changing. देख, so I think Harry Kane is a captain. So नहीं देख चिंतन, एक चीज तो मैं बोलूंगा कि देख वो तो बात सच है कि इतना जो ये लोग ने बोल दिया ना कि अरे क्या फर्क पड़ता है, राइट, वहां जाके लीग जीत गया, वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। बायर्न इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, राइट, वो डिसरिस्पेक्टफुल है। बट हैरी केन को जाके एक जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है ना कि मैंने जाके उनको ये करवा दिया, वो बुंदेसलीगा से नहीं होगा, वो चैंपियंस वो एग्जैक्टली। If he wins the Champions League, then it's epic, bro. And he has 2-3 years in him, and the best part what people don't realize about Harry Kane is he's great off the ball. His passing is outstanding, ridiculous. Assist. Right. कल उसका assist देखो भाई बायर्न के लिए, it was just top notch. He's that one player I think you can change. Harry Kane is a fantastic player. Yes, Harry Kane, fantastic player. यार a lot of जब वो रियाल से लिंक हो रहा था, कुछ रियाल फैंस भी बोल रहे थे हमको हैरी केन नहीं, हम लाइक पागल हो क्या, तुमको हैरी केन नहीं चाहिए। That is English bias. हाँ, बट मतलब ठीक है, whatever it is, but I still feel कि देख वो तो disrespectful है बोलना कि अरे बायर्न क्या जाना है भाई, one of the biggest clubs in the world. But Bundesliga will not be sufficient. A barometer. It will not be a barometer कि केन ने आके उनको फ्लोर, एक बोलते हैं ना फ्लोर रेस करना और सीलिंग रेस करना, सीलिंग रेस होगा अगर वो चैंपियंस लीग जीतेगा उनके साथ, हो जाएगा यार, मेरे को लगा which is a possibility, of course. Yes, Bayern always are one of the favorites to win the Champions League. अभी किम मिन जे साइन किया है, तो डिफेंसिवली थोड़ा बेटर हुए हैं, हैरी केन आ गया है, तो नेक्स्ट सीजन लास्ट सीजन से तो बेटर ही, तो and you see Dillit had a great Tuchel has season. won the Champions League, right? So he's won the Champions League with Chelsea. One thing, एक चीज सिर्फ देख के अच्छा लगा कि I mean these awards to me personally don't matter, but UEFA Coach of the Year में at least it was good to see Simone and Spalletti at least get their recognition. We obviously know Pep is going to win it. There's no doubt about it. To be honest, I don't think he deserves it because he had the team, he won the treble. But I would personally give it to Spalletti यार, मतलब जो the joy उसने दिया है नापोली को to win a title without being favorites, I think it's unmatched. For me Chintan, it was just enough to see those two names there because it's not every day you see that. I think मेरे लिए उतना ही वो मेरी ट्रॉफी थी, दोनों के नाम दिख गए बस। I think boys पेप की ट्रॉफी थी इस बार। हाँ वही I think he deserves treble यार, come on boys, come on, treble। But एक चीज तो बोल सकते हो, EPL पेप जीता नहीं, आर्सेनल हारी है, that is there. Arsenal lost the PL than him winning the PL. वो तो टॉपिक फॉर अनदर डे है भाई, वो बात करेंगे तो हम लोग का किक ऑफ
का टाइम हो जाएगा शुरू लेकिन लेकिन but were you एक guys सुपर चैट indirectly rooting for Arsenal or City only to win it? तुम दोनों especially. It's like मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन का मैच चल रहा है और आप मेरे को बोल रहे हो कि who do you want to see win? मतलब again like आर्सेनल मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ. अगर आर्सेनल लीग जीत जाता ना तो आर्सेनल फैंस बोलते कि ये आर्टेटा ने तो क्लॉप की लेगेसी कर दी है इक्वल प्रीमियर लीग में. ठीक है, वो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था. ओके और फिर सेकेंडली पेप जीत गया तो 5 in 6 years. तो his comparisons with Klopp, his chart goes up. So it was a very tough one. I हमारे तो टॉप 4 का था, हम वो भी नहीं कर पाए. हमारी बैटल ही अलग थी. It was not a battle. I was rooting for Arsenal. I was rooting for Arsenal. चिंतन, मैं बस एक चीज बोलूंगा. आर्सेनल लीग, मेरे को क्लब तो अच्छा लगता है आर्सेनल, बट मैं एक ही चीज बोलूंगा एंड अगेन थोड़ा ये है कि जब हम जाते थे, जब व्हेन वी वर इन द, जब हम टाइटल जीत रहे थे या हम कंटेंशन, एवरीबॉडी वांटेड मैन सिटी टू सेव फुटबॉल ना. सो मैन सिटी सेव्ड फुटबॉल अगेन. सो मैन सिटी सेव्ड फुटबॉल अगेन, क्योंकि जब हम थे कंटेंशन में तो यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल फैंस, ओ मैन सिटी सेव फुटबॉल. Congratulations, I don't got saved again. ये तुम लोग बैंटर में थे. I have no idea what that means, by the way. I'm to be honest, Paul Pogba ने लाइफ में एक ही चीज सही बोले कि मैन यूनाइटेड फैंस know very little about football. That's the only statement where he's made sense. एक सुपर चैट भाई इसका क्वेश्चन आंसर या अजय और समझ उसके बाद निकलते हैं यार. ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया यार. हां भाई. Serie is more interesting than Premier League, but where do you think they lack to attract the audience? And what do you think Juve went wrong with the team? I think Ajay bola पिछले पॉडकास्ट में अपन ने बात किया था ये लैक. sorry every Serie podcast ever जो मैंने सन द मॉन्क पे किया, इसका आपको डिटेल में आंसर मिलेगा भाई. नवनीत, सो सॉरी यार, टाइम की थोड़ी कमी है. I'll quickly give it to Ajay यार, शॉर्ट में बता दे. Stadium presidents, FIGC मतलब फेडरेशन, marketing, racism, or tackling bigger issues, top of my list. That's where they lack the mentality. Juve got Ronaldo, and I think that was a financial burden. Guys, मेन चीज क्या है? पैसा. कैश फ्लो इज किंग हर बिजनेस में. फुटबॉल इज बिजनेस. सीरिया का कैश फ्लो इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. कुछ नहीं. मेन बात ये है. सुपर लीग जिंदाबाद. चलिए गाइस, सऊदी लीग का सुपर लीग बन ही गया. हाँ भाई, वो भी है. अभी 2025 के चैंपियंस लीग में दे वांट वन टीम ना इन द यूएफए चैंपियंस. I hate to say this. I told you so. It's happening. He's right. Yeah, देखने लोग चैंपियंस लीग में घुसेंगे. मैंने बोला था देख कि ये लोग चैंपियंस लीग में घुसेंगे. पूछा था ना मैंने वो कि ऑस्ट्रेलिया कैसे एएफसी में घुसा. सऊदी घुस सकते हैं. घुसेगा वो लोग, घुसेंगे वो लोग. यही है प्लान. This is the grand plan. Not to you, but just for PL fans in general. Now I think PL fans know how we feel when we get outbid by outrageous amounts of salaries and fees, man. This is how we feel. थोड़ा सा ये ज्योग्राफिकली बात करें तो इजराइल यूएफए में खेलती है, तो सऊदी अरेबिया बाजू में है. उधर मत घुस. वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. आई थिंक तो फुल नेतागिरी कर रहा है आज. हाँ, वो उधर मत घुस, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. Just on a closing note for your audience, I think of course 10 बजे से चालू हो रहा है सेरिया. जिसको भी ट्यून इन करना है भाई देखो, because अपना योगेश obviously his club is starting his defense, and I think this will be another, as they say, interesting season. Close title race होगा. बहुत make और break चीजें होंगी. AFCON, Asian Cup, बहुत चीजें, injuries, ये वो, नई teams है, नए coaches है, बहुत कुछ है देखने को. I mean, I would suggest that don't form your opinions early on, even if you don't like the quality. I would suggest wait for the drama to kick in. Once we reach the halfway point, you will see a lot of stuff. So yeah, just tune into any game and enjoy.
और कुछ नहीं। So cute you are, Param. तू इंटरनेट पे लोगों को बोल रहा है don't form your opinions already. नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहता early on, but I just don't mean to say that, you know, because people say कि the league is shit and everything early on itself. एक दो गेम देख के. And thank you guys again. I think तुम लोग हो जो Serie का flag outside Serie fans लहरा रहे हो, and because of you I think a lot of people now keep asking us messages. या हम लोग को आता है कई बार. So yeah, good going guys. चलो यार थोड़ा फिर स्विगी कर दो, पास्ता थोड़ा, पिज्जा, पास्ता थोड़ा, इटालियन वाइन कुछ भेज दो यार घर पे. पेरोनी. लोग पूछ रहे हैं कौन से चैनल पे आने वाला है मैचेस सेरिया, किस पे आ रहा है? जियो सिनेमा पे आ रहा है सिर्फ, मेनली टीवी पे यूजुअली नहीं होता है, बट जियो सिनेमा इज वेरी विल गेट इट. मनस तू मेरे साथ सैन सीरो चल. मैं तेरे साथ सैन सीरो चल एक बार, वॉशरूम में जाएंगे उधर देखने को कैसा है वॉशरूम. क्या करना चाहता है मेरे साथ? तू मेरे को वॉशरूम में लेके जाएगा, चिंता. That didn't sound. Yeah, I know that didn't sound right, but एक बार तो ब्यूटीफुल स्मेल तो ले ले, पता चलेगा स्टेडियम कैसे यार. अरे यार मैं इधर सुलभ शौचालय नहीं चले जाऊं घर के पास, सैन सीरो सुसु करने जाऊं. सैटरडे आफ्टरनून को चलो. चिंतन बोलता है चल साथ में कुछ तूफानी करते हैं. बापुरियो. चलो भाई लोग, बिग थैंक यू यार जिसने भी ज्वाइन किया. 400 लोग देख रहे हैं हमको अभी भी. अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करो यार. मिलान मैंने डाला नहीं है, बट ऑल ऑफ दीज गाइज हैव सोशल मीडिया प्रेजेंस. मैं स्क्रीन के बाद ऐड कर दूंगा, प्लीज फॉलो देम. ये लोग प्रॉमिस करते रहते हैं कि ये लोग खुद का पॉडकास्ट शुरू करेंगे, बट इनके प्रॉमिसेस तो क्या ही बोले. राइट, बट यार यू हैव वन. हां उनका है, बट इट्स डेड राइट नाउ. है बट इट्स डेड. It's unfortunately. So उससे क्या फायदा किसी का, अगर चालू कर. राइट, बट एनीवे मैंने सदमोंग पे तो हम लोग बुलाते रहेंगे यार इन लोग को. ठीक है, until then take care of yourselves, enjoy your Saturday. आज वॉच अलोंग है तो उसमें हम आपसे फिर मिलेंगे. Until then take care of yourselves. Serie starts at 10 PM. लिवरपूल का मैच 7:30 बजे है. हमारे चैनल पे वॉच अलोंग भी है, मजे करेंगे इंशाल्लाह. मोहम्मद साला हैट्रिक मारेगा, लिवरपूल 2 घंटे के लिए टॉप ऑफ द टेबल हो सकता है. सो ट्यून इन एट 7:30 गाइस. सी यू गाइस. टेक केयर. ऑलराइट, बाय बाय. अरे वो छोड़ ही दिया डायरेक्ट. अरे अजय इज एक